Hasan, bist du wenig Kara fikir. Assalamu alaikum. Warm welcome to this all important match. It's going to be match number 5. It's Jehlum Blues Pampore taking on Runchasers Pampore. It's Pampore versus Pampore, interesting. And the two teams in the middle, time for action here. And I got Nazir to join me. Nazir, bright sunshine, wonderful pictures, lush green outfield, and one more thing that is special here, that is the gentle breeze on its way. अस्सलामु अलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये लाइव प्रसारण लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। TCI मैक्सिमट कश्मीर क्रिकेट लीग मैच नंबर 5 और एक तरफ जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया जहां मुकाबला काफ़ी संघर्षपूर्ण रहने वाला है क्योंकि ये 5वां मुकाबला है और ऐसे में पहली पारी प्रारंभ होने जा रही है। खूबसूरत और बेहतरीन वातावरण है, अच्छी खासी धूप खिली हुई है और बेहतरीन विकेट जहां पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है वहां पर टीम को। तो शुरुआत कुछ बेहतर चाहिए, शुरुआत कुछ आकर्षक चाहिए और देखना होगा किस प्रकार के यहाँ व्यवधाएं रहेंगी, किस प्रकार का व्यवधान रहेगा, किस प्रकार की रणनीति रहेगी। एक चुनौती जरूर, लेकिन एक अच्छा क्रिकेट। हमारे श्रोता भी चाहेंगे कि बेहतर क्रिकेट, गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिले और एक रोमांचक स्थिति वाला मुकाबला अंत में देखने को मिले। The two openers arrived. Short pause in the game as Farhan. He's marshalling his troops at the moment. And Mir Mukhtar is playing. He's a part of Jehlum Blues Pampore. MD Shining Star Pampore is part of Jehlum Blues. He's looking nice at the moment, talking of his body structure, facial expression. Looking nice, looking good at the moment. And Garota Country Cricket Stadium is all set to host match number 5 of TCI Max Kashmir Cricket League. Everything is in readiness. It's Gajubana to open the attack again. He's gonna bowl in over number 1. And Jehlum Blues Pampore taking on Runchasers Pampore. Pampore batting first. And as we watch, Gajubana to open the attack. शुरुआत होने जा रही है मुकाबले की। पहली पारी जेहलम ब्लूज की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है। पहली गेंद गजुबाना की हल्के फाइन लेग की और खेला मिस फील्ड हुआ वहां पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए शुरुआत जस्ट बोखारा चौके से और ऐसे में 4 रन शुरुआत होते हुए चौका मिलता हुआ और इस प्रकार से 4 बगैर नुकसान के 4 रन बगैर नुकसान के ये अब तक की शुरुआत। पहली ही गेंद पर जहां चौका मिलता हुआ जेहलम ब्लूज पाम्पोर के विरुद्ध रनचेजर्स पाम्पोर की टीम को शुरुआत चौके से और इस प्रकार से 4 बगैर नुकसान के गजुबाना ने प्रारंभ की है गेंदबाजी और ऐसे में अगली गेंद लेकर के दूर वाले छोर से TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग का यह मुकाबला। ये गेंदबाज बाहर अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों के साथ ऑफ साइड में खेला, रन बनने की संभावना थी नहीं और ऐसे में अगर देखा जाए तो एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो एक बेहतर शुरुआत की आवश्यकता। फिलहाल गजुबाना बाएं हाथ से दूर वाले छोर से और इस बार स्ट्रोक खेला जरूर मिड ऑफ की और पीछे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और एक सिंगल जरूर मिल जाएगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ कुल रन संख्या रनचेजर्स पाम्पोर की पहुंच चुकी है 5 पे बगैर नुकसान के। 5 बगैर नुकसान के। अगली गेंद और इस बार बढ़िया स्ट्रोक गैप में खेला है और गेंद पीछे फील्डर के पास रखे बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी तैनात है। जब तक वे गेंद को फील्ड करते समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ कुल रन संख्या इस समय 6 तक पहुंच चुकी है बगैर नुकसान के। 6 without loss in over number 1. Started with a boundary, then 2 singles coming on successive balls. Here is Gajubana again
wicket keeper, and there is a slip in place, pretty deep, and he's beaten again. Gajubana is bowling really well, even though he conceded 60 yesterday, 63, but he has been a bit unlucky over the past couple of days. He's able to find an edge, but ball didn't carry to the fielder. Even in this match, he beaten the batter on that second last ball, but this one is dispatched into the extra cover boundary for 4. That were brought to you by Just Bukhara. Quality punch shot, earn him a boundary, and with that boundary, first over comes to an end. It's 10 for none after the completion of over number 1. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर में 10 रन बनाए हैं रनचेजर्स पांपोर की टीम ने। जहलम ब्लूज पांपोर के विरुद्ध हालांकि गजुबाना ने पहले ओवर की गेंदबाजी की, 2 चौके पहले ओवर में लगाए वहां रनचेजर्स के बल्लेबाजों ने, और इस प्रकार से 10 रन। टीसीआई मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग का यह लाइव प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। 5वां मुकाबला टीसीआई मैक्स सीमेंट कश्मीर क्रिकेट लीग का, और इसके बाद इस पूल का अंतिम और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। जहलम ब्लूज पांपोर की यदि बात करें, उन्हें आज गेंदबाजी का अवसर मिला है, और दिन के दूसरे मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की भिड़ंत होगी शम्स क्रिकेट क्लब अनंतनाग के साथ, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। और देखना होगा इन परिस्थितियों में किस प्रकार की शुरुआत रहेगी गेंदबाजों की। पहले ओवर में 10 रन बने, अच्छी खासी धूप खिली हुई, खूबसूरत और आकर्षक वातावरण है यहाँ कंट्री क्रिकेट स्टेडियम गरोटा जम्मू का, जहां ये कश्मीर क्रिकेट लीग टीसीआई मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग वर्तमान में खेली जा रही है। 5वां मुकाबला है इस टूर्नामेंट का। 10 रनचेजर्स पांपोर बगैर नुकसान के। Well, it is 10 for the loss of no wicket after the completion of over number 1. It's going to be pace from other end. From far end, it's going to be pace to operate in over number 2. Mohit Nariyal is going to bowl. He's got slip in place. There is a backward point, Swedish point, cover point, extra cover in mid-off. Interesting field set for pacer. And it is gentle breeze underway at the moment. I think he's going to make a maximum out of that breeze. And first ball, outward moment is there. An umpire signaled a wide, so there is addition in score. It's 11 without loss. He bowled wide of the off, and further outward is called as a wide. There is addition in score. 11 without loss in over number 2. He need to keep it simple and bowl in that corridor of uncertainty around that. But he need to take care of his line and length, because he's got the new ball in his hand, that wide cherry. Make maximum out of it. Pitch it in the right areas. Don't bowl it wide of the off too much. And there is a change in the field now. Mir Mukhtar drops down to the third man, and fine leg comes inside 30 yard. That one, good delivery again, outward moment again. Batter is beaten. He was shaving for that drive. Beautifully bowled, extra bounce over the blade into the safe hands of wicket keeper. Unable to find an edge there this time round. He's got slip and wicket keeper there to take care of rest, but he's lucky to survive. And talking of Ram Sharma, who's keeping wickets at the moment, who's doing something here and there. He's going from one end to other end. He's trying to warm up a bit and is exercising. The next one, that's in there, and should run away. That's 4. That were brought to you by Just Bukhara. Solid hit right on top of that one. He waits for the ball to come in, then spanker it through sweeper of cover boundary for 4. And with that, Just Bukhara 4, score propelled to 15 for the loss of no wicket in over number 2. Mohit Nariyal with that one, it was a half tracker, served bit wider on length, and it was easily done by the batter, easy pickings. He was right on top of that one. Then it's just like that, flow with flourish, and up and above he goes into the extra cover area, into the sweep of cover area. Now fielder drops down to the sweep of cover boundary. This is attacking field set. A boundary coming through this area. He's got fielder there now. Oh, next one, he pulls it in the air for a while, but he gets away with that one. That isn't good from fielder there. Needless shy comes in, but no harm done. Score man aesthetic 15 without loss as we are in over number 2. 3 boundaries coming, 2 in the first over. A solitary boundary in this over, which is second over underway. It's 15 without loss as we watch Mohit again. Ram Sharma is keeping wickets. He's standing way back and behind. There is a slip in place. Beautifully bowled. This is a nice mix-up from bowler. Nice comeback. This time he rolled fingers over the ball and ball holding up a bit. Then extra bounce, getting better of the batter, nearly getting better of the batter, but he's lucky to survive. No harm done in the end.
He was shaping for the drive there and is beaten in the process. This is TCI Max Kashmir Cricket League. Match number 5 underway. Last match of Pool A will be played between Sultan Warriors and Shamas Cricket Club Anantnag this afternoon. Banging and shot in the air, and it's in the gap too. So no harm done again. He's lucky to survive. Gajubana does mop up, but not before the two batters crossed over for one more run. It is 16 without loss. An extra ball is coming up because he widened one in this over. 16 रन अब तक बन चुका है रनचेजर्स पांपोर के बगैर नुकसान के। तो प्रारंभिक बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। और गेंदबाजी की बात करें, मोहित नरियाल और गजुबाना जिन्होंने आज गेंदबाजी प्रारंभ की है झेलम ब्लूज पांपोर के लिए। नरियाल इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर के फिर ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ काफी बाहर वाइड का इशारा, वहां पर दयाल सिंह का एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 17 तक रन संख्या पहुंच चुकी है यहाँ रनचेजर्स पांपोर की। झेलम ब्लूज पांपोर जिन्हें गेंदबाजी का अवसर मिला है और आज मीर मुख्तार का चयन हुआ है टीम में। देखना होगा आज जो किस प्रकार का प्रदर्शन देंगे अपनी टीम के लिए जब उन्हें अवसर मिलेगा, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। फिलहाल नरियाल इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर के इस बार गेंद को पोल किया, हवा में है गेंद, उस ओर खिलाड़ी पर पहुंच नहीं पाए। हालांकि कैच लपकने का वहां प्रयास तो था नहीं, लेकिन गेंद को रोका जरूर बॉर्डर लाइन से बाहर जाने में, और कुछ रन जरूर पूरे कर लिया यहाँ पर बल्लेबाजों ने। ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग का ये 5वां मुकाबला पूल ए का, और इस मुकाबले के बाद अंतिम और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा पूल ए का। वो मुकाबला जैसा कि अब तक सूचना पहुंच चुकी है, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला वर्सेस शम्स क्रिकेट क्लब। और शम्स क्रिकेट क्लब ने दोनों मुकाबले अब तक अपने जीते हैं और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने भी दोनों मुकाबले जीते हैं। तो ये आखिरी मुकाबला होगा दोनों टीमों के लिए लीग मुकाबले की यदि बात करें। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें, अब तक रनचेजर्स ने 2 मुकाबले खेले, दोनों में हार का सामना करना पड़ा, और वहीं पे झेलम ब्लूज पांपोर ने 2 मुकाबले खेले हैं और उन्हें भी दोनों में पराजय का मुंह देखना पड़ा है। ये आखिरी मुकाबला दोनों टीमों के लिए, और जहां चाहेगी रनचेजर्स की टीम के जीत के साथ वो इस लीग की समाप्ति करें, इस टूर्नामेंट की समाप्ति करें, जहां तक उनके इस पूल में लीग मुकाबले का सवाल है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारी का 3रा ओवर, 2 के बाद 17 बगैर नुकसान की अच्छी शुरुआत अब तक मिली है, हालांकि विकेट खोया नहीं है। फिलहाल बाएं हाथ के गजुबाना दूसरा ओवर लेकर के अपने कोटे का इस बार ऑन साइड में 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन के साथ 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद रन संख्या 18 तक पहुंच चुके हैं 3रे ओवर में बगैर नुकसान के। रनचेजर्स पांपोर जिन्हें आज बल्लेबाजी का अवसर मिला है इस मुकाबले में। और गेंदबाजी की बात करें, बड़ी बेहतर गेंदबाजी अब तक गजुबाना की हुई है। इस बार खेला जरूर ग्राउंड की ओर, एक सिंगल लेने का प्रयास किया जरूर था, लेकिन जैसे ही देखा फील्डर के हाथ में गेंद, सीधे वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में बगैर किसी रन के डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। और मौसम की बात करें, पिछले कुछ दिनों से आज बहुत बढ़िया वातावरण है, अच्छी खासी धूप खिली है, हालांकि हल्की हवाएं चल रही है, लेकिन एक आकर्षक और बेहतरीन वातावरण है क्रिकेट के अनुकूल। और ऐसे में TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग का कुल मिलाकर ये 5वां मुकाबला, एक सिंगल और रन संख्या 19 3रे ओवर में बगैर नुकसान के। These two teams lost their 2 games on the trot, but talking of second match, they won both their games, and it will be interesting to see which side will remain unbeaten in Pool A. In Group A, we shall come to know this afternoon, because Sultan Warriors won their 2 games on the trot, and 2 successive games were also won by Shamas Cricket Club. Now they are going to be up against each other this afternoon. That's a good shot, straight to mid-off, could be tight, needed direct hit, but he missed the target in the end, so no harm done. 1 more run added. Good running between the wickets, risky one, but both the batters are safe, both are home. 1 more run added. It's 22 for the loss of no wicket in over number 3. You're watching JK Sports Time YouTube, and we're bringing you the live broadcast from Country Cricket Stadium, Garota, Jammu. Gajubana flight and offer, driven straight, 2 men converging, ball wins the race. That's 4 that were brought to you by Just Bukhara. बेहतर स्ट्रोक चौका मिलता हुआ या जस्ट बुखारा, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई। और ऐसे में अगर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले की बात करें, जम्मू कश्मीर ने अब तक 95 रन बनाए हैं, 2 विकेट खोए हैं। ये है वहां से सूचना। शुभम खजूरिया ने 6 बनाए, और यावर खान ने 17 बनाए, विक्रांत शर्मा ने 40 का योगदान दिया, पारस डोगरा ने 27, और जो कि टीम का कप्तान है। तो अब तक 95 पे 2 कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया
रन गति और बड़ौदा के साथ ये रणजी मुकाबला इस समय J&K का चल रहा है और अच्छी स्थिति में 95 पे 2 इस समय वर्तमान रन गति. Exactly, they're going really nice, 95 for 2 with some handy contributions. Yeah, Shubham failed to deliver like that. The way he's known for his wonderful knocks, but others are doing really good job. And talking of skipper, created history. Second time in the history that J&K beating Mumbai, that star-studded side. Now today against Baroda, which is a wonderful team, and this one played over mid-off into the long offense for 4, and ball going on to hit the advertising hoardings displaying Kashmir Cricket League, TCI Max, the media partner JK Sports Time. Beautifully driven, just Bukhara 4. It's 30 on the board for the loss of no wicket. We're talking about that Jammu and Kashmir nowadays going really nice in Ranji's circuit. This is good message and good news for all of us. The 95 for 2 at the moment. Abish should be taken. It is good catch in the end. Nicely held. Wasn't easy. Not his natural side. Diving towards left and does well in the end. Holding on to the ball. So first blood is drawn. First wicket is gone. It's 30 for 1. And the man to go is Mudassir. He's caught at extra cover. Wonderful goal. Nice pair of hands. And that brings curtains down on his innings. He's on his way back to pavilion. Who's going to come in at number 3? We'll have to wait and watch. You were talking about that. It's pleasant atmosphere here at Garota today. No doubt about that. Bleed blue skies, dispersed clouds, but away from the center. But sun is shining brightly over the center. It has painted this stadium in an awesome manner. Look at the outfield, lush green. Some of the dry patches are there, no doubt about that. And talking about greenery around the center, it's eco-friendly atmosphere here at Garota. TCI Max Kashmir Cricket League. This match number 5. We have one more match coming up this afternoon. It's a double header for today. Sultan Warriors will be facing the likes of Shamas Cricket Club Anantnag. Shamas Cricket Club won 2 out of 2. Sultans won 2 out of 2. And today's winner will decide who will remain unbeaten. From Pool A or from Group A, we shall come to know this afternoon. That brings Umar Amin. He's in at number 3. He's got slip in place. He's got backward a point. And he's got Gully and backward a point in place. There is Gully Mir Mukhtar and backward a point Farhan Mir. Extra cover. Then there is cover and extra cover. Mid-off. Coming on to the onside, there is long on in place. Oh, he's bowled round legs. First ball and he's gone. He disappeared here. Bowled round legs. He has no idea, no clue, clueless. And ball hitting the wood. Timber is disturbed. It's wicket number 2. 1 brings 2. 1 more bites the dust. He's unaware what happened. But he's bowled round legs. He can't believe. Look at that. He seems to be lost somewhere. देखिए वहां पर लेग स्टंप की शेप में एक सीधी रहती हुई गेंद और कहीं ना कहीं वहां उन अधूरे मन से असमंजस की स्थिति रह गई. छोड़ना संभवतः चाहते थे पर गेंद सीधे लेग स्टंप्स पे जा टकराई और इस प्रकार से बोल्ड आउट होकर के दूसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए. ये दूसरा विकेट और इस प्रकार से 30 पे संभवतः दूसरा, 30 पे पहला विकेट, 30 पे दूसरा विकेट. और यहाँ वो जो साझेदारी प्रारंभ में बहुत बढ़िया चल रही थी, अंततः उसका समापन हुआ पहले विकेट के रूप में. उसके बाद आते ही दूसरे बल्लेबाज भी वापस पवेलियन लौट गए. तो 2 विकेट जहलम ब्लूज पामपोर ने अब कहीं ना कहीं वापसी की है. जो शुरुआत में साझेदारी पनप रही थी, एक बढ़िया साझेदारी निभ रही थी, उसको न सिर्फ समाप्त किया बल्कि एक और विकेट यहाँ मिलता हुआ 2 विकेट 30 पे गंवाए हैं रनचेजर्स पामपोर की टीम ने. He's on his way back to pavilion. That brings newcomer who comes in at number 4. We shall come to know it's 30 for 2 at the moment as we are in over number 4 halfway stage, halfway mark. Jehlum Blues Pampore getting 2 wickets earlier on. It's a kind of a move on. Now need to exert more amount of pressure, certain amount of pressure on batters. But batters need to resurrect. A partnership is what Runchasers require at the moment. Let's see how Athar and the newcomer will bat now. How they gonna dictate terms. And talking of bowler,
Shahid, moreover, talking of bowler, he's on a hat trick here. He picked up 2 in 2 and he's on a hat trick. He's on a roll here. Here comes the hat trick ball with a slip in place. Shahid on a hat trick. New man is Mir Hafiz. What can Hafiz do? Here comes Shahid with a hat trick ball. He blocks it back to the bowler, not for runs. The threat which was largely looming on Hafiz there. And he stands firm. Keeps it away, so no harm done. No hat trick there, it's 30 for 2. 30 पे 2 मीर हाफिज जो कि नए बल्लेबाज आए हैं मीर हाफिज और देखना होगा वो किस प्रकार से यहाँ बल्लेबाजी करेंगे। एक साझेदारी में सहयोग देना है और इस बार ऑन साइड में एक सिंगल जरूर मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को और लगातार रन संख्या में इजाफा करना होगा। न सिर्फ रन संख्या बल्कि साथ में इस साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है यहाँ रनचेजर्स पाम्पोर के लिए, जहलम ब्लूज पाम्पोर के लिए। TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग वर्ष 2025 पांचवा मुकाबला पूल ए का और आज पूल ए के लीग मुकाबले जो है वो समाप्त हो जाएंगे क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और शम्स क्रिकेट क्लब अनंतनाग के बीच खेला जाना है। उसका भी लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल जे स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। अगली गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक गैप में गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका यहाँ बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ अच्छी गेंद थी पर गेंद की पिच तक पहुंचते हुए गैप में गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। चौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई कुल रन संख्या रन चेजर्स की इस समय पहुंच चुकी है करीब करीब 35। 2 विकेट के नुकसान पे आज पहले बल्लेबाजी का अवसर मिला है रन चेजर्स को जहलम ब्लूज के विरुद्ध और अब तक 35 रन बनाए हैं पर 2 विकेट जरूर गंवाए हैं जहां रन चेजर्स की टीम ने अच्छी और खूबसूरत धूप। और ऐसे में TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग के अंतर्गत ये 5वां मुकाबला पूल ए का और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो अब तक बेहतर शुरुआत पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी लेकिन उसके बाद लगातार 2 विकेट गंवाए यहाँ रन चेजर्स की टीम ने और अब कहीं न कहीं एक दबाव जरूर नजर आएगा बल्लेबाजों पर और उस दबाव को और बेहतर करने के लिए आपको 1 विकेट चाहिए। अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, खेला जरूर लॉन्ग ऑन की ओर, पीछे खिलाड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिए पर 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 36 रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पे। और ऐसे में जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। अब तक 36 रन बना लिए हैं और कुल मिलाकर ये पारी का चौथा अथवा 5वां ओवर वर्तमान में चल रहा है। 5वां ओवर 36 रन 2 विकेट अब तक हुए हैं रन चेजर्स की टीम ने। जहलम ब्लूज पाम्पोर इस समय गेंदबाजी करते हुए उनकी टीम और अब तक अच्छी शुरुआत गेंदबाजों ने दिलाई है, 2 विकेट जरूर लेकिन जहां एक साझेदारी निभाने का प्रयास इन 2 बल्लेबाजों का। और इस बार स्ट्रोक बढ़िया पर पंजों के बल उछलते हुए गेंद को हवा में लहराया, एक टिप्पे के बाद संभवतः गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछलता पंजों के बल उछलते हुए गेंद को खेला लेकिन टॉप एज लगा था, चौका जरूर बटोरा यहाँ जस्ट बोखारा उस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 40 तक पहुंच चुकी है रन चेजर्स की कुल रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पे। Uppercut comes into play. You also call it uppercut. It is just like that, on his toes, riding on the bounce, then directs it down to the third man, on the bounce into the fence. Now fielder drops down to the boundary. Mir Mukhtar is clueless at the moment. Should I go there or should I stay inside 30 yard? Now he's asked her to stay inwards, stay inside. It was banged in short wide of the off from Mohit. Mohit has got good pace. He's able to hit the deck hard, but he's unable to put brakes on the scoring rate. The next one is driven straight, and look at that. No need to run for those 4 of them. Into the advertising board, just Bukhara 4. Once the ball left the blade, he was damn sure this one is gonna find the fence. It does. That's why he didn't move. And the man at mid-on, showing no positive response. He knew that this one is going to run away. It is just like that. It's just like that knife through or hot knife through butter. It was a wonderful shot, driven straight into the V. That's 4, and score is 44 for 2. Where Mansoor Aziz here. Voice of Valley, thank you very much. And coming back to the game, it's 44 for 2. 44 पे 2 यह है अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। और ऐसे में मोहित नरियाल
तेज गेंदबाज जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं झेलम ब्लूज पामपोर के लिए, और अब तक 40 रन बना लिए हैं टीम ने रन चेजर्स की ओर से। और फिलहाल अगली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट, मोहित नरियाल। ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, बैक ऊपर आकर के हल्के हाथों के साथ खेला जरूर मिड ऑन की ओर, वहां पर खिलाड़ी तैनात फील्ड हुई पर एक सिंगल जरूर मिलता हुआ। और लगातार अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया यहाँ बल्लेबाज की। और एक रन के साथ ही रन संख्या 45 2 विकेट के नुकसान पर ये पारी का 5वां ओवर अथवा छठा ओवर वर्तमान में चलता है, 5वां ओवर क्षमा कीजिएगा। और आखिरी गेंद होगी मोहित नरियाल की इस ओवर की, 4.5 45 2 विकेट पे रन चेजर्स पांपोर की टीम। नरियाल इस ओवर में आखिरी बार, ये गेंद तो इस बार हवा में गेंद पर वहां पर खिलाड़ी पहुंचे नहीं और गेंद चली गई थर्ड मैन पे सीमा रेखा से बाहर, चौका मिलता हुआ एक और जस्ट बोखारा। और इस प्रकार से ओवर की अंतिम गेंद पर चौका मिलता हुआ ओवर समाप्त, 5 पूरे 49 2 विकेट के नुकसान पे। Not in control, but he's gonna take that. Vivrant is out. Akat Shafar pre. And the third one bites the dust, and Vivrant Sharma departs. Big loss for JK team against Baroda. And it's Vivrant Sharma, he has to go ultimately, eventually. Wicket number 3 down, and Jammu Kashmir 106 for the loss of 3. And third one, not big partnership coming, but they need to build it and resurrect it again. But it's a tough opponent side, Baroda, in Ranji cricket. But the way Jammu and Kashmir outplayed Mumbai, star-studded, current international stars were part of Mumbai side. Quite some achievement, and JKC doing wonders. A match to remember. देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, Worthy of a match of Ranji structure, that too against Mumbai-like team. Oh, it's quite some achievement, believe me. बहुत बड़ी उपलब्धि कहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, चाहे वो रोहित शर्मा हो, श्रेयस अय्यर हो, या उसके अलावा शार्दुल ठाकुर जैसे जो है खिलाड़ी हो, तो उनके सामने एक चुनौती रखना और फिर उस मुकाबले में जीत को सुनिश्चित करना, मैं समझता हूँ जिनके क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। और You're talking about Shardul. All batters failed overall in Australia, but Shardul was the one who batted number 8, number 9 throughout the Border Gavaskar trophy, and he batted like a champion in Australia, and even he bowled really well. But I'm talking of his batting, and he batted really well like a champion. He batted throughout BGT, and he's the one. I'm quite impressed the way he batted there. And the other name alongside Shardul was one more, that young lad who scored that 100, Nitish Kumar Reddy, who scored that 100 in one of the games in BGT, in one of the innings in BGT. But he also batted really well. But talking of Nitish Kumar Reddy all the time, and Aussies felt that this lad has got something. We won't say Virat isn't. Virat is GOAT, greatest of all time, no doubt about that. Rohit Sharma is of a tall stature. But the way this lad, I was talking about Shardul Thakur, he scored few 50s there, and he batted like a champion throughout. He performed in each and every game. Like that, we have seen that nowadays, trend is changing. It's a new trend going on. It's a trendy nowadays, we can say that. Now bowlers are scoring runs. Even in Pakistan vs West Indies test match bilateral series, we saw that Warri Khan and others, even Kemar Root scoring 30-odd runs. We have seen that even the later order or the down the order batters, the tail-enders are scoring runs. We've seen that in the second test match of bilateral series between Pakistan and West Indies. We saw that bowlers scored 50-60 runs at the fag end. निश्चित तौर पे आपने विस्तार से जानकारी दी अपने श्रोताओं को, और वहाँ पे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, बल्कि अगर JNK की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा उस मुकाबले में, रणजी मुकाबले में मुंबई के विरुद्ध, चाहे वो उमर नजीर हो या उसके अलावा आकिब नबी, आबिद मुश्ताक, सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। But what I admire about Oman is that he didn't celebrate the wicket of Rohit Sharma, the Indian captain. That is a good shot, little fumble there. Allowed one more run, but there wasn't a single, he conceded one. We were talking about that. Umar didn't celebrate. I think this tells us how mature the guy is. देखिए मान सम्मान क्या चीज है, वो उन्होंने वो ऊंचे स्तर का क्रिकेट है, और न सिर्फ ऊंचे स्तर का क्रिकेट बल्कि आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं। पर यहाँ देख लीजिए, ये उस कैलिबर के खिलाड़ी है जो जानते हैं परिस्थितियों के अनुकूल कैसे बल्लेबाजी करनी है, उठा करके स्क्वायर लेग के ऊपर, और एक और जस्ट बोखारा छक्का मिलता हुआ यहाँ अंतिम गेंद पर छक्का जड़ा, और इस छक्के के साथ ही रन संख्या इस समय रन चेजर्स पांपोर की पहुंच चुकी है
58 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Power play comes to an end. 58. A 6 to finish the power play on a high. 58 for the loss of 2 after 6 overs. It's 18-over game between Jehlum Blues Pampore and Runchasers Pampore. Both the teams from Saffron town of Valley. Saffron and the place Pampore is famously known across the globe for saffron production. And we have Mir Mukhtar, MD, Shining Star Pampore here. He is the part of Jehlum Blues Pampore, Mir Mukhtar. This is JK Sports Time YouTube bringing you the live broadcast. Well then, coming back to the game, it's 58 for the loss of 2. And you're watching JK Sports Time on YouTube. Keep watching, keep sporting, and enjoy the game wherever you are. This is TCI Max Kashmir Cricket League match number 5 underway. We have one more match coming up. Sultan Boris taking on Shamas Cricket Club this afternoon. And these two teams, Jehlum Blues Pampore and Runchasers Pampore, both the teams in search of their first win of the tournament. They lose 2 on the trot. At least both the teams playing for their pride and want to take 2 invaluable points before leaving the stage and event. नए ओवर की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स एंड से नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। राइट आर्म पहली गेंद देकर के उस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी और वापस खेला रक्षात्मक रूप से बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 58 रन 2 विकेट के नुकसान पे रनचेजर्स पाम्पोर वर्सेस जेहलम ब्लूज के विरुद्ध ये मुकाबला। TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग और जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पाम्पोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान हुरिकेन्स, डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब, जनता स्पोर्ट्स, TCI मैक्स 58 7वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद राइट आर्म, ये गेंद एक और अच्छी गेंद, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, सही टप्पे पे सही दिशा और लंबाई के साथ और लाइनो लेंथ बहुत बढ़िया। नियंत्रण आपकी गेंदबाजी में, अनुशासन आपकी गेंदबाजी में, तो परिणाम आपके सामने। Is keeping it wicket to wicket. That is the old mantra. If you see that there is nothing in the wicket, there is nothing in the pitch, it is full of runs. This is the old mantra. Go straight, take pace of the ball, make the batter toil hard. And for that purpose, if he want to hit the ball, he need to come forward. He need to use his footwork and the foot movement. I need this vitamin C. And this is a kind of vitamin C. It has its own importance in your life. And in the meantime, bowler runs away from us. Goes and bows. Oh, driven straight. This time there was space behind the ball. But fielder does well. He covered almost 5-6 yards. Gets to the ball. Does mop up in style. Sends us in a flat return. Good field in the end. Saved 3 runs for his team. There was little pace behind the ball and he driven it straight. Like that of an arrow. But find his fielder in place. Took pace of the ball again. Oh, can't hit the target. He missed the target and conceded 1 more run. There is addition in score. It's 60 on the board. It should be 61. Partnership is 30 of 19 balls between Mir Hafiz and Athar. Athar and Mir Hafiz in the middle. Goes away from us. Over the bowler's head. Not keeping that one down. And he plays it a little uppish and over the man at Mir, over the bowler's head for a quick single. 1 up pro grabs, or the single up pro grabs, and the 2 batters crossed over, 1 more run at it. Every run is important and runs are coming. Runs keep coming down the leg side. Down the leg side. And it goes all the way down to the fine leg. Fine tickle. Little deviation of the bat. And it runs down to the fine leg fence for 4. That boundary brought to you by Just Bukhara and powered by TCI Max Cement. And Nazir call it Mazbuti Ka Wada. And talking of that promise. And one more thing added to it is believe firmly
And down the leg side, it runs down. Races away for a 4. Score is 65 for 2 after 7 overs. This is TCI Max Kashmir Cricket League. It's match number 5 underway. We have match number 6 coming up. This afternoon, Shamas Cricket Club will face likes of Sultan Warriors Baramulla. That's going to be the last league round robin match of Pool A or Group 1, or the Group A. From tomorrow onwards, it's going to be Group B coming up. UA on Facebook and YouTube respectively, simultaneously. Next one, shaping for that slog sweep. Neil is down on one knee. Then off the inner edge, chance of a run out, but he's home. Good running between the wickets. And the two batters are quick between wickets. Good running in the end. And with that, coupled with that brace, there is addition in score 67 for the loss of 2 wickets. Around the wicket, Krishna Kumar Yadav goes away from us again. And look at that one. Wasn't that far from stumps. He missed the liner ball completely. But interesting, talking of Jehlum Blues Pampore and Runchasers Pampore, most of the batters holding that anthem blade in their hands, most of the batters using anthem blade because of Mir Mukhtar effect. और न सिर्फ जेहलम ब्लूज पाम्पोर बल्कि रनचेजर्स की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया, एंथम का बल्ला जो है उनके हाथ में, और ये एंथम की परंपरा जिसे अब धीरे धीरे से पूरे कश्मीर में देखने को मिल रही है। इसी बीच एक और बढ़िया स्ट्रोक, चौका मिलता हुआ जस्ट मौका यहाँ टीम को, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रनचेजर्स की टीम लगातार एक अच्छी साझेदारी ये 2 बल्लेबाज बीच मैदान में निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए, और अच्छा कहा जा सकता है उनके दृष्टिकोण से, क्योंकि एक साझेदारी की आवश्यकता है यहाँ से, और इस साझेदारी को बखूबी अब तक दोनों बल्लेबाजों ने निभाया है, और कहीं ना कहीं बेहतर कहा जा सकता है, इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा इन 2 बल्लेबाजों को। खूबसूरत समा, खूबसूरत मुकाबला, खूबसूरत मैदान, और साथ में TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग का ये कुल मिलाकर 5वां मुकाबला। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही है इन 2 बल्लेबाजों द्वारा, मीर हाफिज और उनके साथ सबब अतहर रशीद, और क्या शानदार बल्लेबाजी अब तक की है। 2 विकेट जरूर गंवाए है 30 पे, लेकिन उसके बाद से 41 की ये साझेदारी, 71 रन बन चुके हैं। 8वें ओवर की सबब गेंदबाजी हो रही है, 71 रन, 18 ओवर की नियुक्त पारी होगी, और 8वें ओवर में 71 रन रन संख्या की अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया, क्योंकि T20 के हिसाब से इस समय 8वें ओवर की गेंदबाजी में 71 रन और 2 ही विकेट खोए हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतर और आकर्षक शुरुआत, और उसमें अब तक सक्षम हुए हैं ये दोनों बल्लेबाज। Yeah, exactly. Quite successful both the batters in the middle. The duo succeed. Stitch at 41. Shared that stand of 41 unbeaten streak and unbeaten stand. Need to prolong and need to bat as deep as possible. Push further and keep pushing it just like that. After losing 2 wickets on a SAM score of 30, these two have added on 41. It has added a lot of value on this partnership. It is just like that value added service. Down the leg side. Where is this one going? Down to a spine leg boundary for 4. That 4 brought to you by Just Bukhara. Leg by signalled by umpire Jangi John. And that one down the leg side. It rolls off the grass and goes down to the fine leg fence. 75 for 2. As Krishna Kumar continues to bowl around the wicket. Good shot. Plays it onto the onside. Before fielder can come in. He wanted second. But fielder quickly onto the ball. Denied that second run. Good feeling in the end. But he deliberately used his soft hands on that occasion. Rolled his wrist a little bit and worked it away for a quick single. He checked the shot in the end. It was away from bat. He thrown his kitchen sink at it. Wasn't close to the ball. Wasn't up to the pitch of the ball. He was nowhere near. That's why he checked the shot in the end.
It wasn't fuller one, it was wider one. Width on offer, but it was pretty wide. And he checked his shot in the end. He knew that he wasn't close to the ball. So one more run at it. It is 77 after 8 for the loss of 2. 8 के बाद 77, 2 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। ये पारी का 9वां ओवर और अब एक बार फिर एंड चेंज किया गया है गजुबाना का। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खेला जरूर, हालांकि मिड ऑफ खिलाड़ी से थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ और नतीजा 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 77 से बढ़कर 78, 78, 2 विकेट के नुकसान पे 8.1 ओवर की गेंदबाजी। अथर और मीर हाफिज ये जोड़ी इस समय बीच मैदान में गजुबाना गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद जगह बनाई, ऑफ साइड में खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात थे, फील्ड हुई गेंद पर एक और सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी रणनीति, 2 गेंदों से 2 सिंगल अब तक मिल चुके हैं इन 2 बल्लेबाजों को। 79 रन संख्या, 8.2 ओवर की गेंदबाजी। रनचेजर्स पाम्पोर वर्सेस जहलम ब्लूज पाम्पोर के बीच ये मुकाबला पूल ए का TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग के अंतर्गत। अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी मिडल स्टंप की और ऑन साइड में वही पास में खेल करके दौड़ पड़े 1 रन के लिए। अच्छी रणनीति, एक और सिंगल चुरा लिया। 3 गेंदों से 3 रन आ चुके हैं और अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि जानते हैं बड़े स्ट्रोक्स नहीं तो ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना काफी महत्वपूर्ण और मानसिकता यहाँ दोनों बल्लेबाजों की क्लियर नजर आ रही है। 1-1 रन से इस पारी को आगे बढ़ा रहे हैं, 1-1 रन से इस साझेदारी को निभा रहे हैं। अब तक 80 रन बन चुके हैं और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक हवा में है, पीछे खिलाड़ी है और जहां कैच थमा दिया। अंततः 80 पे 30वां विकेट, 50 की साझेदारी 30वें विकेट के लिए समाप्त हुई और इस प्रकार से जहलम ब्लूज को एक और विकेट मिलता हुआ 80 पे 30वां विकेट गंवाया है यहाँ रनचेजर्स पाम्पोर की टीम ने। Arthur has to go. He's caught at deep mid wicket and he's on his way back to pavilion. Needless from Arthur. He was middling the ball. He was on top, but he perished. It wasn't a wicket-taking delivery, but he has paid the price for it. Gone after that one. Rush of blood, and is taken in the end. So wicket falling here, and Mir Mukhtar is looking into the bat there. And the way he's looking at the blade, he knows everything. He knows pros and cons. The man behind Anthem in Valley, and each and every batter is using Anthem blade. And Mir Mukhtar taking quick look of the blade. What happened? It struck the ball, but find its man in place. It didn't elude him, can't beat the man there. It goes straight into the hands, down to the throat, and is taken in the end. ऊंचाई जरूर थी पर दूरी नहीं थी गेंदें और ऐसे में वहां डीप मिड विकेट पे पकड़े गए। एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद थी यहाँ गजुबाना की। बाएं हाथ के गजुबाना बहुत ही बेहतर तरीके से समय गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। आक्रमण उनका बेहतर है, अनुशासन उनकी गेंदबाजी में, पैनापन उनकी गेंदबाजी में। यहाँ विकेट जरूर मिला है, इस ओवर में उनको फिलहाल 3 विकेट गंवा दिया है। अगली गेंद गजुबाना की, इस बार हल्के हाथों के साथ ऑफ साइड में उसको खेला, 1 रन जरूर पूरा किया। वहां पर हल्का सा फंबल हुआ, बैकअप कर रहे थे मीर मुख्तार, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास, पर उससे पहले दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी है संभवतः 81 पे। 3 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर यहाँ समाप्त हो चुका है अथवा कोई गेंद बाकी है ये देखना होगा। 81 रन 3 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की गेंदबाजी, 81 रन बने, 3 विकेट, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए यहाँ रनचेजर्स की टीम ने। 3 विकेट जरूर खोए हैं, अभी भी 9 ओवर का खेल, क्योंकि 18 ओवर की ये नियुक्त पारी है, 18 ओवर का ये मुकाबला होगा। इस बार पहली गेंद खेलने का प्रयास किया जरूर था, ऑफ स्टंप पर आते गेंद को लपेटकर ऑन साइड में खेलने का प्रयास असफल रहा, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन की। अच्छी धूप, खूबसूरत मैदान और डायमेंशंस की बात करें तो बहुत बड़े डायमेंशंस है इस मैदान के, कंट्री क्रिकेट स्टेडियम गरोठा। और इस बार रूम बनाया, ऑफ साइड में गेंद को निकाला, फील्डर पीछे तैनात, एक सिंगल और मिल जाएगा 82 10वें ओवर में रनचेजर्स की टीम। और यहाँ कोशिश जरूर जहलम ब्लूज पाम्पोर की कि 150 से कम लक्ष्य तक रोका जाए, न्यूनतम लक्ष्य तक रोका जाए, कि लेकिन दूसरी ओर रनचेजर्स का प्रयास रहेगा कि वो 150 से अधिकतम का लक्ष्य खड़ा करें, दूसरी पारी में आसान परिस्थितियां ना रहें वहां बल्लेबाजों के लिए। एक और सिंगल मिल जाएगा ऑन साइड में खेल करके दोनों बल्लेबाजों द्वारा, 1 रन और खाते में 82 पे 2।
82, 10वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे। यह स्कोर इस समय टीम रन चेजर्स का जहलम ब्लूज पांपोर के विरुद्ध। हाव भाव देखने लायक यहाँ टीम जहलम ब्लूज पांपोर के। हाँ, विकेट कीपर से हल्का सा फंबल जरूर हुआ, पर रन बनने की संभावना थी नहीं। अच्छी गेंदबाजी, 12 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज। 10वां ओवर वर्तमान में जहलम ब्लूज की ओर से, और अब तक 82 रन बना लिए हैं टीम ने। एक और अच्छी गेंद ऑफ साइड में, एक सिंगल और मिल जाएगा, और एक सिंगल के साथ ही गजुबाना ने गेंद को फील्ड कर लिया, पर एक रन लेने से रोक नहीं पाए बल्लेबाजों को। रन संख्या में लगातार वृद्धि होती है, करीब करीब 83 अथवा 84 तक पहुंच चुकी है रन संख्या। 84, 10वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे जहलम ब्लूज पांपोर की टीम को अब तक 3 विकेट मिले हैं। एक और विकेट की तलाश, साझेदारी को पनपने का प्रयास दोनों बल्लेबाजों का, पर उससे रोकना होगा। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर ये गेंद थी, बाहर की तरफ एक कोण बना रही थी, और उस गेंद का पीछा जरूर किया, खेला जरूर, कवर्स में गेंद को फील्ड कर लिया गया। एक रन और खाते में जुड़ा, और एक रन के साथ रन संख्या पहुंची अब 84 से बढ़कर 85 पे। 3 विकेट के नुकसान पे 10वां ओवर वर्तमान में चल रहा है। 85 रन अब तक बना लिया है टीम ने, और अभी भी इस ओवर में कुछ गेंदों का आना बाकी, ओवर समाप्त हो चुका है। जी हाँ, 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 85 बने 10 ओवर में 8.50 प्रति ओवर के हिसाब से 3 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। अब देखना होगा क्या लक्ष्य रहेगा यहाँ। ऐसे में अगली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गजुबाना फ्लाइट देने का प्रयास कर, मौका इस्तेमाल किया था, क्रीज से बाहर जरूर निकले थे, पर वापस लौटने में देरी कर दी, स्टंप्स भी खेर दिया वहां पर विकेट कीपर ने, और ऐसे में एक और विकेट का पतन गजुबाना को मिलती हुई सफलता। 85 पे चौथा विकेट 11वें ओवर में गंवा दिया है टीम ने। धीमी गति की गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच तक पहुंचना चाहते, लॉफ्ट करना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, पर सफलता नहीं मिली। गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद विकेट कीपर के पास, और उन्होंने पलक झपकते ही बेल्स गिरा दी, स्टंप आउट होकर के वापस मैदान से बाहर जा रहे हैं। वहां पर संभवतः हाफिज सर, इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ 85 पे चौथा विकेट 11वें ओवर में रनचेजर्स पांपोर की टीम ने गंवा दिया। OS arrives, OS comes out to bat. OS Muscle Man, and it's the name written against his name on Crick Heroes. OS Muscle Man. He's got fully loaded body, fully loaded biceps, triceps. It is 85 for the loss of 4. We are in over number 11. OS failed yesterday miserably, but today it's the high time because there is no pressure at all. Pressure is absolutely gone as they're already out of the competition, playing for their pride today's match. Here is Gajubana. Oh, look at that one. There is a shot for LBW. Can't impress Jangir John, the umpire, and he shakes his head in disapproval. Didn't approve his appeal. He pleaded before umpire. Can't impress him. So now I'm done an OS Muscle Man. He's again feeling heat there. He's unable to take him on. He misread first ball completely. That's in the air. Will it carry to the field? No, it doesn't. Ball lands in no man of space. And OS Muscle Man gets away with that one. He's off the mark. Wasn't up to the pitch of the ball, but somehow gets away with that one in the end. He looked in all sorts of trouble. Clipped away. Should get one. OS wanted second. Can't get the second. So we'll have to contend with one. And Jammu and Kashmir is 133 for the loss of 4 wickets. Kanaya Vadvan batting on 17, and Sahil, who just walked in, is yet to open his account. Kanaya, the brother of Jatin Vadvan, Kanaya Vadvan. Jenkin need to build that big building block. Inning number 1 because Baroda is a strong team. Now bowlers need to do their level best. Yeah, at the moment it's the job for batters to come in and
do something special for JK. But later on, Umar and others need to step up again. Akib Nabi, all need to bowl well. That's just the non-striker runs down towards long on area, straight boundary. There is fielder. Could only manage one there. That's all he's gonna get. One more run added. Score is 89 for the loss of 4 after 11 overs. Gajubana finishes his over. He finished his over here. He's done with one more. Gajubana 4 overs, 2 for 25. Brilliant spell again. 4 overs, 2 for 25. Nice figures. Splendid spell. Comes to an end. 2 for 25. He will be happy. And he must be pretty good from Gajubana with ball. Fresh over is about to start. That's going to be over number 12. It's 89 for the loss of 4 wickets. Little back away. Then a kind of a pat on the ball and allowed a single. Takes it to 90 for the loss of 4. We are in over number 12. Here is Man again. That's in the air. Where is this one going? And he's taken it long on. Wicket number 5 down, and Musselman departs again. Another small score. And he didn't bother the scorers here. And talking of Aussies taking on the Lankan side, Aussies are 461 for 3. And Usman Khawaja is finally back in form. He's on to 199. One shy of his double 100. Usman Khawaja failed miserably in the BGT. Just a lone half century in that 5-match test series. And now, in the very first innings, he's batting on 199 on the shores of Sri Lanka. At the Sri Lankan shores. And he's doing all the chores with the bat. As he's on to 199. He's batted really well. And Smith also completed his 10,000 test runs and scored 35th test run yesterday. It was Usman Khawaja's 14th test run. But now it's going to be double 100. He's going to convert it. Just one shade. 90 for 5. 90 पे 5 रन चेजर्स की टीम। और ऐसे में आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं यहाँ रन चेजर्स पांपोर की जेहलम ब्लूज पांपोर के विरुद्ध 90 रन बन चुके हैं। और देखना होगा यहाँ से कहां तक पहुंच पाएगी टीम, क्या लक्ष्य रहेगा जेहलम ब्लूज पांपोर के सामने रन चेजर्स द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 18 ओवर की ये नियुक्त पारी रहेगी। 18 ओवर का ये मुकाबला, 5वां मुकाबला पूल ए का टीसीआई मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर, रफी वानी फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, जनता स्पोर्ट्स, टीसीआई मैक्स, HND। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का बरसात जोड़ने के लिए। एक सिंगल और एक रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 91 रन संख्या पहुंच चुकी है कुल इस समय रन चेजर्स की 5 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद, इस बार बेहतर स्ट्रोक पर पीछे खिलाड़ी है। एक रन और खाते में जोड़ता हुआ और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी है 92 पे 5 विकेट पे रन चेजर्स। एक और सिंगल, अच्छी रणनीति ऑफसाइड में खेल करके मीर फरहान के पास गेंद पर एक सिंगल लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। 92 से बढ़कर 93, 5 विकेट पे ये 12वां सबकते वर्तमान में चलता हुआ 12वां ओवर, 93 रन, अंतिम गेंद का आना बाकी 11.5, 93, 5 विकेट के नुकसान पे।
आखिरी गेंद लेग स्टंप की शेप में, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, एक सिंगल पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, बैट से अथवा पैड से, लेग बाई का इशारा, अंतिम गेंद पर रन 94, ओवर समाप्त हुआ, 12 पूरे 94 रन बने 5 विकेट पे, 6 ओवर का खेल पहली पारी का बचा है। After 12, it's 94 for the loss of 5. 7 extras. 12 overs done. 6 overs remaining. It's 18-over game being played between Jehlum Blues Pampore and Runchasers Pampore. We have second match of the day. Sultanwood is taking on Shamus Cricket Club. Sultan lost 2 finals. Won both the finals they lost in this part of the world, outside Valley. This went, and in this tournament they're almost in the quarterfinals. Who knows where they're gonna finish it off in the end, but at the moment they are looking very nice as they're going good. As far as Sultanwood is concerned, in this tournament they won 2 out of 2. That means they are almost in the quarterfinals. But it's going to be interesting which side they're going to face in the quarterfinals. Now every match is important and every match is knockout. Quarterfinal, semi-final and final. So 3 matches. If a team wins and reaches the final, need to win 3 straight games to take that title and trophy home. Right now it's 94 for the loss of 5. Short pause in the game. Time for drinks. Players needed kind of breather and they're enjoying their time. Tea time doctor. Exactly. Tea time doctor. TCI मैक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 12 के बाद 6 ओवर का खेल बचा है। 94 रन बने हैं 5 विकेट पे मंसूर अजीज। और हाल फिलहाल में मंसूर अजीज जो कि ऑफिशियल कमेंटेटर हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के, उन्होंने कीमती मान रचा है। 90 मुकाबले लगातार उन्होंने यहाँ किए हैं, यानी कि लाइव प्रसारण 90 मुकाबलों का आप तक पहुंचा है। और हमने कल भी जिक्र किया था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब आप इस प्रकार का कार्य करते हैं कि इतिहास रचते हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कमेंटेटर के लिए। तो मंसूर अजीज ने वो कारनामा रचा है, 90 मुकाबले लगातार उन्होंने किए हैं। और ऐसे में देखा जाए 94 हमारे पर 94 रन बने हैं। और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो 6 ओवर का खेल, 36 निर्धारित गेंदें, 5 विकेट आपके पास। थोड़ा सा समय है बातचीत करने का क्योंकि TCI मैक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए 6 ओवर का खेल, 5 विकेट, यहां से रणनीति क्या रहनी चाहिए बल्लेबाजों की? In remaining 6 overs, they need to up the tempo. They need to go 10 and over. That means 60, and that will mean they will finish around 150, 160. I think that's going to be a good target at the end of over number 18. Must be eyeing 150, 160. Need to go 10 and over. Need to up the sleeve, long handle, and just go after the bowlers. And Mansoor Aziz created record. He commentated 91 or more than that games on the trot. This is a kind of praise from our side and a kind of recognition, as we reckon that the lad is working very hard. He's 35 years young and it's really going nice. Well, coming back to the game, it's 94 for 5. 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर TCI मैक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद दोबारा से खेल प्रारंभ होने जा रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट मुकाबला। और मंसूर अजीज की आपने अभी बात छेड़ी है, हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन कार्य उन्होंने किया है, कीमती माना रचा है। जिस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य किया है, क्योंकि जब सफर पे निकले हैं, अपने कार्य के लिए निकले हैं, तो फिर पीछे मुड़ करके देखा नहीं, क्योंकि किसी चुराग का अपना मकान नहीं होता, जहां जलेगा वही रोशनी लौटाएगा। और ये मंसूर अजीज ने कार्य किया है। और निश्चित तौर पे फिलहाल वर्तमान की बात करते हैं, इस मुकाबले की बात करते हुए नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। पारी का 13वां ओवर
वर्तमान स्थिति में 12 के बाद 94, 5 विकेट के नुकसान पे रनचेजर्स पांपोर की टीम का कुल योग। नए की शुरुआत, पहली गेंद कंट्री क्रिकेट क्लब छोड़ से ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद, और उस गेंद का पीछा जरूर किया था, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, शरीर से दूर, पर सफलता मिली नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 94, 5 विकेट खोए हैं अब तक टीम ने और 94 रन बना लिए हैं। अभी भी कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल बचा है यहाँ टीम के लिए। इस बार बैकफुट पर आए, ऑन साइड में खेला, एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, एक सिंगल पूरा कर लिया। 95 रन संख्या पहुंच चुकी है। 12.2 ओवर की गेंदबाजी में 95 बने और 5 विकेट खोए हैं। और इसके बाद एक और मुकाबला, वो आखिरी लीग मुकाबला होगा पूल ए के, पूल ए की यदि बात की जाए, सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला वर्सेस शम्स क्रिकेट क्लब अनंतनाग। दोनों टीमों ने अब तक अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं और ये आखिरी और अंतिम मुकाबला होगा सुल्तान और शम्स का। और वहीं पे इस मुकाबले की बात करें तो आखिरी लीग मुकाबला दोनों टीमों के लिए। यहाँ जेहलम ब्लूज पाम्पोर की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट के सफर की समाप्ति चाहेगी और वहीं पे रनचेजर्स का भी प्रयास होगा कि कम से कम एक जीत अर्जित की जाए, मान सम्मान को बरकरार रखा जाए। फिलहाल अगली गेंद 95, एक बार फिर तिरछे बल्ले के साथ उसको गाइड किया। मीर मुख्तार के पास अच्छी फील्डिंग, वहां पर मीर मुख्तार के 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 96 पे। 96, 5 विकेट के नुकसान पे रनचेजर्स की टीम। जहांगीर जॉन और दयाल सिंह जो इस प्रतियोगिता में अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं एज एन ऑफिशियल। ये उनका 5वां मुकाबला है इस प्रतियोगिता में। यहाँ रन मिलेगा नहीं दोनों बल्लेबाजों को और यहाँ से प्रयास अब दोनों बल्लेबाजों का कुछ अतिरिक्त जोखिम उठाया जाए, कुछ विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी की जाए। हल्के हाथों के साथ उसको वही पास में खेला, विकेट कीपर पहुंचे, फील्ड हुई गेंद पर एक सिंगल जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को, एक और सिंगल। 97, 5 विकेट के नुकसान पे 13वें ओवर की गेंदबाजी में। 13th over in progress. It's 97 for the loss of 5. One last time in this over. Krishna Kumar Yadav is bowling at the moment. It's 97 for the loss of 5. Worked away onto the onside. Should get one. That's all he's going to get here. And that single takes it to 98. It's 18 over game. Schedule it per side. Schedule it per side. A schedule it per side. Well, 98 on the board for the loss of 5 wickets. We have one more match coming up this afternoon. It's going to be Sultan Warriors taking on Shams Cricket Club. Unbeaten, both the teams. The team which will win this afternoon will remain unbeaten from Pool A or Group A. We have Mansoor Aziz with us, the man who created history recently here in this part of the world. And he's with us at the moment, young lad. 18 or 35, it is just between that. It's a kind of a mix-up. Driven straight to long off. There is a possibility of a single, one more run at it. Score probability 99 for the loss of 5. We are in over number 40. And we'd definitely love to know from Mansoor Aziz, where is Usman Khawaja, who's batting at 199 a short while ago. Driven straight. They are looking for cover. And that's gone for 4. Dismiss you. Straight down the ground. Like that of an arrow. And with that boundary, there is addition in score. And it's 103 for the loss of 5. Hop their side back to pavilion. And they are 103. That is solid 4. Brought to you by Just Bukhara and powered by TCI Max. And it's 103 for the loss of 5. We are in over number 14. It's 18 over game. Just 4 overs remaining. And 4 overs are going to come after this. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। हालांकि 4 ओवर का खेल अभी भी शेष है इस पहली पारी में। टीसीआई मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग 2025 वर्ष के अंतर्गत ये पूल ए का 5वां मुकाबला। जेहलम ब्लूज पाम्पोर की टीम गेंदबाजी कर रही है और वहीं पे रनचेजर्स पाम्पोर की टीम ने अब तक इस सत्र में, अगर पहले सत्र की बात करें, इस पहली पारी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। और इन परिस्थितियों में यहाँ से आने वाले सत्र की अगर हम बात करें, आने वाले इन ओवर्स की बात करें, कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा यहाँ से रनचेजर्स की टीम को। और ऐसे में एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ। 154 Jammu and Kashmir. Shubham Khujuria gone for 6. Yaba Khan contributed 17. Vivrant Sharma 43. And Paras Dogra scored 43. And Kanaya Vadvan is batting at 29. Young, talented lad, Kanaya Vadvan. And he's also sponsored by Anthem, I think.
And he's got Sahil Lothra, the other batter who's batting on 8. And they won 53 for 4. I think this is good score. Just need one more 100 there to propel their team score around 250, 260. But bowlers need to bowl well again. Umar and company need to deliver. But under the captainship of Paras, something special is happening for Valley this time round. Yeah, no doubt about that. Shubham didn't contribute today, but he has been an ace player of Jammu and Kashmir side. And Kanaya Vadvan is really going nice nowadays. He's in red hot form. Sponsored by Anthem. What a player he is. Top notch, 106 for the loss of 5. He's beaten the batter there. Man is bowling. Pratik Man. He's keeping his man, Nazir. At the moment for his side. He's bowling from far end. On his backyard, on his backside, we can see that big advertising boards or the boardings or the hoardings we have there displaying Kashmir Cricket League, TCI Maximent and Jammu and Kashmir JK Sports Time together as a team, as a unit, bringing cricket live and bringing cricket to life. This is what we're bringing our beloved viewers way from Country Cricket Stadium, Garota, Jammu. And we have Mansoor with us, young lad who worked very hard this winter and captured almost he covered 91 games across Vijaypur, then MA Stadium and Garota. He conquered every field. Simply the best lad in this part of the world and in the business. It's been a wonderful top notch. बहुत ही बढ़िया उनका जो है ये सफर रहा है। और ऐसे में अगर बात करें तो केसी स्टेडियम की बात हो, एमए स्टेडियम की बात हो, कंट्री क्रिकेट स्टेडियम गरोठा की बात हो, तो बहुत ही बड़ा कार्य उन्होंने किया है। और जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया, 90 मुकाबलों में उन्होंने जो है लाइव प्रसारण अपने श्रोताओं तक पहुंचा है, कमेंट्री की है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है क्योंकि आसान काम नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है और सफलता के द्वार खोले हैं। तो निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि आने वाले समय में भी हमारी जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी टीम द्वारा उनके साथ नेक शुभकामनाएं रहेंगी और इसी प्रकार से वो अपना कार्य करते रहें, सफलता के द्वार खोलते रहें। फिलहाल वर्तमान की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें, यहाँ जेहलम ब्लूज पाम्पोर और रनचेजर्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट। दोनों टीमों की यदि बात करें तुलनात्मक तौर पर तो कुछ अच्छे खिलाड़ी दोनों टीमों में, कुछ बेहतरीन युवा क्रिकेटर्स और ऐसे में कुछ अनुभवी क्रिकेटर। तो ये एक बेहतर क्रिकेट वर्तमान में टीसीआई मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग 2025 वर्ष के अंतर्गत खेली जा रही है। पूल ए आज समाप्त होने जा रहा है। जहां तक लीग मुकाबलों का सवाल है, ये 5वां मुकाबला वर्तमान में, और उसके बाद ठीक 2 बजे एक और मुकाबला, वो आखिरी मुकाबला होगा, 6ठा मुकाबला कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट का रहेगा। वो मुकाबला होगा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला वर्सेस शम्स क्रिकेट क्लब अनंतनाग के बीच। वर्तमान में रनचेजर्स की बात करें तो एक बेहतर और शानदार शुरुआत कहना चाहिए मिल चुकी है, 5 विकेट जरूर खोए हैं। और ऐसे में कुल रन संख्या जो इस समय है 107, 13 अथवा 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 107 रन बने हैं 5 विकेट पे। आखिरी 4 ओवर का खेल, क्योंकि 18 ओवर की ये नियुक्त पारी है और ऐसे में 14 पूरे हो चुके हैं, 4 ओवर का खेल बचा है रनचेजर्स के लिए। और रनचेजर्स चाहेगी यहां से अंतिम 4 ओवर में करीब 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 40 रन और जोड़ ले तो 145, 147, वो जो 150 के आसपास लक्ष्य रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण दूसरी पारी में चुनौती रह सकती है विपक्षी टीम यानी कि जेहलम ब्लूज पाम्पोर। Around 140, 147, that means 7 or shade of 7 and over will require the other side. That's still going to be a good target. 7 and over. It will take some doing. Fresho begins first ball and is up for a quick single. Good start. One more run added to the tally. 108. They need 40 odd runs from here on to take it to 140 plus and finish around 150. They need badly some 40 or 40 plus runs here. It's over number 15 we're in. Yasin on strike. Yasin wanted to go big. Bat swing is there, but no connection. He swung his blade, but to no avail in the end. It's a dot delivery. 108 for 5 over number 15 we are in. Just 3 overs remaining after this one. Bright sunshine, gentle breeze, colorful flags waving around the center. And it's a wonderful place to be. Country Cricket Stadium. This one nicely bowled
Saw the batter shaping for big shot. He planted his left foot out of the line of the ball, or just outside the line. He wanted to go big again, but is beaten in the process. This is nice from bowler Mohit Nariyal. Once again, he bowled really well. He saw the batter shaping for big shot, and ball keeps little low. Not what he intended. He wanted to go big. He wanted to launch him. As Yassi knows that we need runs here at this very crucial juncture. We need to find some odd boundaries here down the leg side. Bad delivery. Bad line. Need to reload and re-bowl that one. And an extra ball is coming up now. With that extra run, score moves on to 109. This isn't good. He chipped him with a dot delivery, but the next one is wide. He wided it. Need to understand that you can't afford wide deliveries. Each and every wide will mean you need to bowl that extra delivery, extra ball. Good shot. Should fetch one, and that's all. He's happy to content with 110 for 5. 110 पे 5 मोहित नरियाल गेंदबाजी कर रहे हैं दूर वाले छोर से। 110 रन रनचेजर्स ने बना लिया है 5 विकेट पे। 15वें ओवर की गेंदबाजी और उसके बाद 3 ओवर का खेल शेष रहेगा पहली पारी के आधार पर। यदि बात करें इस मुकाबले में, इस पहली पारी में अगली गेंद मोहित की, और इस बार खिला पर ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, और मीर मुख्तार के पास शानदार फील्डिंग, उन्होंने वहां पर निश्चित तौर पर कुछ रन जरूर बचाए। एक सिंगल तो जरूर मिला वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ 116 संभव थे 15वें ओवर में। 111 क्षमा कीजिएगा, 111 रन बना लिए हैं। और ये पारी का कुल मिलाकर 16वां ओवर, 15वां ओवर आखिरी अंतिम गेंद लेकर के मोहित नरियाल 111 5 विकेट पे। मोहित की ये गेंद, और इस बार स्ट्रोक बेहतर, खूबसूरत स्ट्रोक पर पीछे खिलाड़ी हैं। जब तक वे गेंद को फील्ड करते, एक और सिंगल मिल गया। अंतिम गेंद पर रन आया, ओवर समाप्त हुआ 15 पूरे 112। रनचेजर्स पांपोर, 3 ओवर का खेल बचा है, 5 विकेट गिरे हैं अब तक टीम के। After 15, it's 1-1-2 for the loss of 5. Half their side back to pavilion. 3 overs remaining, 18 balls. If they fetch 10 an over, that means they're going to finish in at 142. That's going to be a good total. But interesting to see how Mir Mukhtar is going to bat today. Is he going to find that meaty part of Anthem Blade? It will be interesting. Jammu and Kashmir facing Baroda, the last match in group stage. And in the meantime, it's 112 for the loss of 5. 16th over is about to start. Mir Mukhtar fielding an offside. That one, he wanted to fetch it. He was eyeing to go onside, but didn't middle in the end. But no harm done. He's okay, he's fine. He's getting ready to face the next one with new energy. Where is this one going? Can he energize here? Or all beaten. Wicketkeeper Rohit Sharma is also beaten. Just a single, not more than that. One more run added. It's 113 in over number 16. Shahid was in his third over, 2.22 for 10. Brilliant figures. This time he decided to go at it onto the front foot and works it away. Will just be one. And with that single, score propelled to 114. Halfway mark in over number 16. 12 balls remaining after this one. Here is Shahid again. This time plays it straight to the skyline. There is a fielder. Needed direct hit, but he's home. Unable to deny that single. Bit lazy. It gone straight to the fielder at a good pace, but he couldn't respond in time. It's 115 for 5. That one, it's width on offer, wide it. Wide signaled 116 for the loss of 5. It was width on offer. It was way away from that marker on that occasion.
He lost control in the end. But you need to control your nerves and line and length. This time inside the line, just behind bowler there. He's looking at his bat. He couldn't time that one. So there is nothing wrong with the blade. Its bat is okay. But there was no footwork. That's why it could only go behind the bowler there. He took pace off this time as well. Rolled fingers over the ball. This is good cricket. Smart cricket from Shahid. After 16, 118 for 5. 16 के बाद 118 5 विकेट के नुकसान पे रन चेजर्स पांपोर की टीम 2 ओवर का खेल बचा। 18 ओवर की नियुक्त पारी, 118 रन बना लिए हैं 16 ओवर में और 2 ओवर का खेल बचा है। निर्धारित 12 गेंदें बची हैं पहली पारी की रन चेजर्स के लिए जहलम ब्लूज पांपोर की ओर से। टीसीआई मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग पूरे 5वां मुकाबला पहली पारी और ऐसे में रन चेजर्स 118 तक पहुंच चुके। अच्छी खासी धूप खिली हुई कंट्री क्रिकेट स्टेडियम गरोटा जम्मू में जहां ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। तीसरा दिन इस प्रतियोगिता का 118 और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत पारी का 17वां ओवर अब प्रारंभ होने जा रहा है और देखना होगा बच्चे में 2 ओवर्स में। और यह वापसी बहुत बढ़िया रही है जहलम ब्लूज पांपोर की क्योंकि 118 तक अब तक रोक के रखा है बल्लेबाजी की। अगर बात करें यहाँ रन चेजर्स की बात करें तो 118 रन बनाए नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद और इस बार अपील की जा रही है और एक सिंगल पूरा कर रहे हैं। लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ। 1 रन और खाते में 119 5 विकेट पे 16.1 ओवर की गेंद हासिल। 17वां ओवर 119 रन और वो जो लक्ष्य 140 150 का था उस तक पहुंचने का प्रयास यहां बल्लेबाजों का रहेगा पर कोशिश जरूर दूसरे ओर से गेंदबाजों की कि 130 के आसपास सीमित रखा जाए यहां रन चेजर्स की टीम को। 119 5 विकेट के नुकसान पे जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण तक पहुंच रहा है। खराब गेंद, दिशा और लंबाई पे नियंत्रण नहीं, काफी बाहर लेग स्टंप से वाइड का इशारा अंपायर दयाल सिंह का। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ कुल रन संख्या रन चेजर्स की 120। 5 विकेट के नुकसान पे मोहित नरियाल सबलते गेंदबाजी कर रहे हैं और ये कुल मिलाकर उनका आखिरी ओवर होगा अपने कोटे का जो कि 4 ओवर का कोटा रहता है। पारी का 17वां और 120 रन बना लिया है अब तक रन चेजर्स की टीम ने। अगली गेंद मोहित की और एक बार फिर वहां पे शानदार बेहतरीन गेंद पर उस बेहतर गेंद पर लाभ जरूर मिला मोहित नरियाल को और यहां सफलता मिलती हुई मोहित नरियाल के साथ साथ जहलम ब्लूज पांपोर की टीम को। एक और विकेट 120 पे 6वां विकेट गंवाया है 17वें ओवर में रन चेजर्स पांपोर की टीम ने। 120 for 6 after 16.2 over number 17 we're in and 6th one goes down. Wicket number 6 is down here. Mohit Narwal gets his man. He gets one in the end. He's in his 4th over. 1 for 29. Sajjad Yusuf is going to be the new batter. Sajjad Pollard. He's demoted down the order today and he's limping on the field. Then why is in the lineup? Why is in the playing 11? He's limping. You can see that. He isn't looking fit. Oh, interesting combination. Sajjad playing against Mir Mukhtar. This is a battle to watch out and look at Mukhtar Mir. He's displaying that I can flick the ball, I can glance the ball. He's telling Mir Mukhtar. He's telling Mir Farhan that let me open today. I will show you, I will display that character with the new ball. I'm gonna send it to the all around the park and let us see how he's gonna bat today. As he's showing something there. And look at Sajjad, he didn't pick that one, he misread it completely, it stays too low. It capped low and is lucky that it didn't come in. It went straight into the safe hands of wicket keeper, but stays too low. Was an easy one to pick, but Sajjad gets away with that one.
Sajjad Butt and Mir Mukhtar up against each other. Two friends like brothers, but up against each other. Interesting battle to watch out. There is little adjustment in the field. Interesting. It's Pampore versus Pampore. Here is Mohit. Second time to Sajjad. Banger in shot. Sajjad comes down the track, but finds field at mid-off. Bowler half stop made by Mohit. Then ball roll on, goes behind bowler. And Gajubana does mop up in the end. It's 1-2-1 for 6 in over number 17. 121 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे सजाद यूसुफ नए बल्लेबाज आए हैं और थोड़े से दर्द से करा रहे हैं, लेकिन यहाँ बल्लेबाजी का उन्हें अवसर मिला है। टीम में उनका चयन जरूर हुआ है। अगली गेंद इस बार खेला जरूर था। फील्डिंग का प्रयास वहां पे गेंद की गति को जरूर कम किया, पर एक रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। एक और सिंगल। रन संख्या अब 122 समझते 17वें ओवर में। 6 विकेट के नुकसान पे रनचेजर्स पांपोर की टीम जेहलम ब्लूज पांपोर के 122. TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग 5वां मुकाबला टूर्नामेंट का। मोहित नरियाल और इस बार अंदरूनी भाग पर रन जरूर मिलेंगे। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। अंदरूनी भाग पर रन जरूर मिले। जस्ट बुखारा चौका मिलता हुआ और इस चौका के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 126 126 पे 6 रनचेजर्स पांपोर जेहलम ब्लूज पांपोर के विरुद्ध। और ऐसे में देखा जाए तो एक बेहतर और शानदार मुकाबला। अब तक 126 रन बना लिए हैं टीम ने और अभी भी 1 ओवर का आना बाकी। और ऐसे में आखिरी ओवर का खेल बचा है 11 रनचेजर्स के लिए, क्योंकि 18 ओवर का ये मैच रहेगा। और ऐसे में 17 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, आखिरी ओवर का आना बाकी। 17 ओवर में 126 रन बना लिए हैं 6 विकेट पे रनचेजर्स की टीम ने। जेहलम ब्लूज के सामने क्या लक्ष्य रहेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब मात्र 6 गेंदें बची हैं। आखिरी ओवर इस मुकाबले में, इस मैच में पहली पारी की यदि बात करें, आज पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला था रनचेजर्स की टीम को जेहलम ब्लूज पांपोर के विरुद्ध। जहांगीर जॉन और दयाल सिंह ये 2 अंपायर आज के इस मैच के। और उसके बाद एक और मुकाबला लेकर के हम जरूर पहुंचेंगे आप तक। वो लाइव प्रसारण आप तक पहुंचेगा जेके स्पोर्ट टाइम के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मुकाबला होगा शम्स क्रिकेट क्लब अनंतनाग वर्सेस सुल्तान वारियर्स बारामूला के बीच। आखिरी ओवर पहली गेंद और बहुत बढ़िया तेज तरार स्ट्रोक, पर इस स्ट्रोक का कोई लाभ नहीं ले पाए वहां पर बल्लेबाज। डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 17.1 के बाद 126 6 विकेट के नुकसान पे। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम, फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान, हुरिकेन्स, डेलीगेट स्पोर्ट्स क्लब एचएनडी, जनता स्पोर्ट्स, टीसीआई मैक्स। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का अपने श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद लेते रहिए। अगली गेंद 126, यहां कुछ रन जरूर मिलेंगे। एक सिंगल चहलकदमी करते दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 127 17.2 के बाद 4 गेंदों का आना बाकी है पहली पारी में जेहलम ब्लूज पांपोर की ओर से रनचेजर्स पांपोर के लिए। 127 और काफी हद तक रनगति पे अंकुश लगा है। अंतिम सत्र में रोका जरूर है जेहलम ब्लूज के गेंदबाजों ने रनचेजर्स की टीम को। यहाँ ऑन साइड में एक उड़ता हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी पहुंचे जरूर पर गेंद को सीमा रेखा से अंदर धकेल नहीं पाए और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोकारा चौका। इस चौके के साथ रन संख्या 131 6 विकेट के नुकसान पर 17.3 अंतिम ओवर की 3 गेंदें शेष। 18th over in progress. That's for handy boundary, healthy boundary, and much needed one for Sajjad and company. With that boundary, there is addition in score. It's around 130 now. Need a few boundaries here, few more, but that one it's nicely bowled by Pratik Man. Nearly ox him, but wide up the off. And Sajjad was eyeing to go over mid on. And next one, it's a wide delivery, trying to chase this one down, but it's wide up the off. He'll let it go. And they all sing signal divide. It's 132 now. It is Man again. And Sajjad again wanted to fetch it from wide up the off.
inner edge before Skella can come in and stop the ball. One more run. It's 133. Last ball is coming up. Final ball. Last ball. On strike is Yasin. That's a good shot. There is Gajubana on the boundary line. Could be tight. But wayward return allowed the second run. They finish on 135. 136 is the target for Jehlum Blues. Mir Mukhtar and Mir Farhan is walking off as they need 136 to win this one. We'll be back shortly with Chase. Join us for the chase in a while. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Back live, back with the chase. 136 up for grabs is what Jehlum Blues Pampore will be looking for from their allotted 18 overs, as they need 136 to win this one. And at this very crucial juncture, the two openers in the middle, Mir Mukhtar is one of them, and he's got Ram Sharma, the other opener. They're chasing 136. Who's gonna open the attack for Runchasers Pampore? Wicketkeeper comes across, having a word with his bowler. Mir Mukhtar on the other end, he's at the non-strike end, and Ram will take strike. Ram Sharma, the Jammu, having a word with his bowler how to operate, where to pitch it straight away. It's going to be spin to operate. We have one more match coming up this afternoon. It's going to Sultan Warriors taking on Shamas Cricket Club. Join us for that game too this afternoon. And the two teams are unbeaten in the tournament. As far as TCI Max Kashmir Cricket League is concerned, the two officials, Jangir John and Dayal Singh, and it's game time here at Country Cricket Stadium, Garota. Ram Sharma on strike, wicketkeeper up to the stumps. Here is ball one. Clips it away onto the onside. Wanted second. Oh, there was a yes no. Mir Mukhtar need to hurry, and he's home finally, and a lot of smiles all around the center. There was a kind of a mix-up. Mir Mukhtar, should I run or should I stop? There was something like that going on in his mind. Should I? And in the end, he decided to scamper through. So 2 runs added. Flicks it, but straight to fielder at scare. So no run. 2 for none after 2 balls in over number 1. Ram Sharma on strike. It will be interesting how Mir Mukhtar will bat. He's got Anthem Blade in his hand. Here is the next one. But there is man at mid-off, not for runs. A dot delivery. Each and every dot ball is important. It's Mudassir Langu. Down the leg side. Bad delivery, bad line. 5 gifted wides. 5 runs here. That's 4 that were brought to you by Just Bukhara and powered by TCI Max Cement. Mazbuti Kabada, but it's down the leg side. So 5 gifted runs, 5 wides. You got just 136 to defend. You need to keep things tight, bowl in the right areas. Don't bowl there. But he wided one way down the leg side. Far to down leg, called as a wide. 5 gifted runs. 7 रन बना लिए हैं अब तक टीम ने, और ऐसे में विकेट सुरक्षित मुख्तार मीर और राम शर्मा ये प्रारंभिक जोड़ी जहलम ब्लूज पाम्पोर की ओर से। रनचेजर्स ने 135 बनाए हैं, 136 का न्योता सामने। अगली गेंद शर्मा के लिए, इस बार फिर ऑफसाइड में खेला, जरूर दौड़ पड़े एक सिंगल के लिए। हालांकि हल्का सा फंबल वहां पर जरूर हुआ, पर उसका नतीजा एक सिंगल मिलता हुआ जहलम ब्लूज पाम्पोर की टीम को 1 और रन, और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 7 से बढ़कर 8, और पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी में मीर मुख्तार। आज उनका चयन हुआ है टीम में, और देखना होगा इस अवसर को किस प्रकार से वो बुन पाएंगे। और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास ये गेंद नीची रहती हुई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। एक बेहतर पारी की आवश्यकता उनसे, और उनकी टीम चाहेगी कि कुछ बेहतर शुरुआत दे अपनी टीम को। 8 रन। अगली गेंद इस बार जगह बना करके खेला जरूर मिड ऑफ की ओर, लेकिन मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात बड़े आत्मविश्वास के साथ इस गेंद को फील्ड कर लिया गया। बगैर किसी रन के ओवर समाप्त हुआ, पहला ओवर समाप्त। जहलम ब्लूज 136 के जवाब में 8 बगैर नुकसान के। After the completion of over number 1, Jehlum Blues are 8 without loss. Mir Mukhtar and Ram Sharma in the middle. The other 2 teams are in the house here. Shamas Cricket Club and Sultan Warriors Baramulla. Both the teams are finally here. Shamas Cricket Club
and Team Sultan Warriors. Here is second over. Down the leg side, goes for the sweep, connects. And it runs down towards backward of scuff ends for 4. That were brought to you by Just Bukhara and powered by TCI Maximin. Solid 4. The resolution in scoring to the double figures, 12 without loss. 12 रन बना लिए हैं अब तक और ऐसे रन संख्या में वृद्धि होती हुई इस चौके के साथ ही दूसरा मुकाबला शम्स क्रिकेट क्लब अनंतनाग वर्सेस सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के बीच होगा। वो आखिरी लीग मुकाबला होगा इस पूल का। फिलहाल 5वां मुकाबला दूसरी पारी 136 बनाने हैं जेहलम ब्लूज पामपोर की टीम को। राम शर्मा और मीर मुख्तार ये प्रारंभिक जोड़ी इस समय जेहलम ब्लूज पामपोर की ओर से और अब तक 12 रन बना लिए हैं। दूसरे ओवर की समाप्ति ये गेंदबाजी हो रही है और 12 रन अब तक बन चुके हैं। फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से राम शर्मा अगली गेंद का सामना करने के लिए और फिर लेग साइड में और एक और बढ़िया स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, 12 से बढ़कर रन संख्या 16। आपके सामने 136 का लक्ष्य है और अच्छी शुरुआत। राम शर्मा बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, गजब के फॉर्म में है। जब से इस प्रतियोगिता का आरंभ हुआ है तब से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कुछ पारियां खेली है और ऐसे में ये अलग बात है कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, उनकी टीम अभी तक कोई मुकाबला जीत नहीं पाई। लेकिन अगर उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो शानदार प्रदर्शन अब तक रहा है इससे पूर्व उनका मुकाबले में और आज भी इस मुकाबले में एक बेहतर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। Ram is look good throughout the tournament, but the end result isn't good for his team. He batted really well and he's also in good colors even in today's match, but his team failed to deliver as a unit. Oh, that's another one. Quality cover drive. It's through. That's 4. Ram is showing some application here. Look at that one. Everything in store and in one place. Footwork, timing, balance. And it's called sheer class and balance. Majestic from Ram Sharma. Young lad, thinner bodied, but he's got huge talent, or talent in its abundance. That was a quality cover drive, driven through covers, earn him a boundary. Just Bukhara 4. Next one onto the pad line, none learning the lesson. String onto the pad line again, shaping for that sweep shot. And wide signaled again. I think ball is in deep love with Jahangir John today. Even yesterday we saw that. It's nearing in on Jahangir John. It's trying to corner him. Oh, what was that from Mir Mukhtar? Mir Mukhtar somehow read that one in the end and keeps it away on offside. Mir Mukhtar is happy that he's off strike and he opened his account after ages. He's off the mark. देखिए अपना खाता खोला मीर मुख्तार ने, लेकिन यहाँ जैसा कि हमने जिक्र किया या बड़ी पारी की आवश्यकता, एक बड़ी पारी खेलनी हो गई, लेकिन यहाँ राम शर्मा लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और एक और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया राम शर्मा ने। जस्ट बोखारा चौका, लेकिन मीर मुख्तार को ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है। एक रन जरूर उन्होंने पूरा किया है, लेकिन समर्थन देना होगा और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है और कोशिश उनकी जरूर रहेगी। आज उनका पहला मुकाबला है इस टूर्नामेंट में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर परफॉर्म करें, कुछ बड़ा प्रदर्शन करें, कुछ शानदार बल्लेबाजी करें। राम शर्मा ने एक और बेहतर स्ट्रोक खेला पर एक सिंगल जरूर मिलता हुआ। राम शर्मा गजब का ये खिलाड़ी है, निश्चित तौर पर जितनी प्रशंसा करें इस खिलाड़ी की उतने का। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अब तक का इस खिलाड़ी द्वारा इस टूर्नामेंट में। ओवर समाप्त हो चुका है, 2 ओवर की गेंदबाजी और 2 ओवर के बाद जेहलम ब्लूज पाम्पोर 28 बगैर नुकसान के। Yasin gone for plenty in this over. So after the completion of 2 overs, it's 28 without loss. Mir Mukhtar opened his account after consuming 3 balls, but Ram is playing really well here. Ram Sharma, he's middling the ball, he's timing the ball. Driven straight, should beat the man. It does. That's 4, and that was brought to you by Just Bukhara, powered by TCI Maximin, sports promoter from North Kashmir. Mansoor Khan trying to stop the ball beyond the boundary line, but ball eludes him. We had 2
famous personalities from North Kashmir here, Mr. Gulzar Ahmed, the chief organizer, and cricket expert Mansoor Khan. Driven again, but Tajammul is there. Tajammul is quickly onto the ball, so no run. Scoreman static 32 for the loss of no wicket. Ram Sharma is batting on 24 of 10 balls. Ram Sharma batted really well throughout the tournament, but his team failed to win 2 out of 2. Today his side is looking in good touch at the moment. They're looking in control. Waits for the ball to come in. It was a fuller one. Driven but straight to field. Little fumble, allowed a single. Mir Mukhtar back on strike again. What can Mir Mukhtar do? Where is this one going? Mir Mukhtar. Oh, that's a quality shot. Driven straight. There is man at long on who does well to stop the ball. And Mir Mukhtar moves to 2. It's 34 for the loss of no wicket. As we watch Mudassir again. Oh, that's a quality cover drive again. And that one runs down to the extra cover. That's 4. And that was brought to you by Just Bukhara. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन राम शर्मा का और साथ में सहयोग मीर मुख्तार का मिलता हुआ झेलम ब्लूज पाम्पोर की टीम को तीसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है। 136 आपके सामने लक्ष्य है। ये पहला मुकाबला है आज के दिन का। एक और मुकाबला जैसा कि हम समय समय पे आप तक अपने श्रोताओं तक ये सूचना पहुंचा रहे हैं। सुल्तान वारियर्स बारामूला का मुकाबला होगा शम्स क्रिकेट अनंतनाग के साथ। हालांकि दोनों टीमों ने अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं। आखिरी लीग मुकाबला होगा पूल ए का और ये 5वां मुकाबला है और दोनों टीमों के लिए अंतिम मुकाबला। झेलम ब्लूज ने दोनों मुकाबले हारे हैं और वहीं पे रनचेजर्स की टीम ने भी अपने पिछले दोनों मुकाबले हारे हैं। यहाँ एक जीत सुनिश्चित करनी होगी रनचेजर्स के विरुद्ध झेलम ब्लूज पाम्पोर की टीम को। एक और सिंगल राम शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ और इस सिंगल के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई तीसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है और करीब 35-36 रन बन चुके हैं। 39 रन बना लिए हैं और अभी भी यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए 97 की आवश्यकता। One more run added. That means over comes to an end after 3 overs. They're 39. They're going 13 and over. That's healthy net run rate. That's healthy current rate. They're going really nice, and Mir Mukhtar knows his role very well. That it's better to give strike back to Ram Sharma, who's middling the ball, who's timing the ball, who's got footwork, class, who's got that rare skill set to display. And Mir Mukhtar having a word with OS Musselman there. Changing the bowling. Will it work for Runchasers Pampore? They set 136 in front of Jehlum Blues Pampore. Jehlum Blues Pampore and Runchasers Pampore, both the teams from Sam Town. It's also known as Saffron Town of Valley. Fresh show begins. First ball. That's high. That's into the orbit. And there it goes all the way for a maximum. Solid 6 brought to you by Just Bukhara, powered by TCI Maximum. Solid 6. And with that 6, it's 45 without loss. We are in over number 4. First ball of fresh over. Dispatched. It's Amir operating with the ball. Amir Rashid is being welcomed with a mighty 6 over Scalag. And fielder is going there to find it out where it is. It's into that bushy area. There is dense vegetative cover, and there are a lot of bushes around that Scalag area. It will take some doing. It will take that surgical procedure to find it out and to bring the ball back into the play. 45 without loss. Perfect start here for Ram and Mir Mukhtar. Mir Mukhtar is playing today's match, and Mukhtar is doing well at the moment. He's giving majority of strike to Ram Sharma, who's cashing on at the moment, who's scoring at a good pace.
He batted really well in the first match, even in the second game, but others failed. Against Shamas Cricket Club, it was Ram Sharma who thrown his wicket away in the end. Team lost the plot. They gone on to, and eventually they lost the game, to be precise. And that's the problem with Ram, that he's getting overcautious. Otherwise, he knew that he has a role to play. He's the premium batter. He need to put premium on his wicket. He need to take that responsibility. Is he gonna anchor the innings here? He need to bat as deep as possible. Ball is finally back. Amer to continue. First ball gone for 6. Something is cooking inside his body at the moment. What to do and how to make comeback here? Are we in for a comeback delivery? Only the time will tell us. Ram Sharma, young, thinner bodied. We can call him lightweight, but he's got superb style. Says wait on straight away. Mir Mukhtar wanted single. I think Mir Mukhtar is loving this space. He want to take strike, but Ram unable to pierce cap on offside. Amer continues to bowl. 44 on the board. It's a quality shot again, driven, but find a fielder in place. Quality was there, and he was right behind that one. Score remains 45 without a wicket. Here is Amer again. Oh, this time inside the line. One bounce, couple of bounces into the mid-wicket boundary for 4. Just Bukhara 4 coming. देखिए क्या कमाल के ये खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और मानसिकता इस बल्लेबाज की देखिए, अपने आप को एडजस्ट करना इनसे कोई सीखे, परिस्थितियों के अनुकूल इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं राम शर्मा। और हमने पहले भी जिक्र किया कि इस टूर्नामेंट में अब तक के मुकाबलों की अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा। हाल ये अलग बात है कि परिणाम उनकी टीम के हित में नहीं आया, पर शानदार बल्लेबाजी राम शर्मा ने की है। मीर मुख्तार उनके साथ हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज। ये पारी का चौथा ओवर वर्तमान में 136 चाहिए जीत के लिए। ये गेंद तो इस बार और फिर ऑन साइड में एक और सिंगल मिल जाएगा तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों को। दूसरे की मांग और मीर मुख्तार ने रोका। 1 रन और 50 बगैर नुकसान के चौथे ओवर में जेहलम ब्लूज पामपोर 136 का लक्ष्य मिला है। ये 5वां मुकाबला है TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग 2025 का। आखिरी मुकाबला इस मैच की समाप्ति के बाद सुल्तान वर्सेस शम्स क्रिकेट क्लब के बीच। इस बार धीमी गति की गेंद मीर मुख्तार ने सीधे बल्ले से खेला। एक सिंगल वहां पर मिल जाएगा, हाना की स्थिति, लेकिन अब जाकर के वो सिंगल पूरा होता हुआ दोनों बल्लेबाजों द्वारा 1 रन और खाते में 51 रन संख्या पहुंच चुकी है। अच्छी खासी धूप, अच्छा खासा तापमान, और ऐसे में TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग के अंतर्गत यह 5वां मुकाबला जेहलम ब्लूज पाम्पोर वर्सेस रनचेजर्स पाम्पोर के बीच चलता हुआ। 51 बने हैं और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए करीब करीब 85 रन बनाने हैं। 51 बना लिए हैं, 85 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 136 आपके सामने लक्ष्य है और ऐसे में 51 रन बने हैं। राम शर्मा और मीर मुख्तार ये जोड़ी नाबाद। 4 ओवर की गेंदबाजी और 4 ओवर में 51। और आप यहाँ कल्पना कर सकते हैं तेज तरार विस्फोटक शुरुआत खासकर राम शर्मा का मुख्य योगदान रहा है। कुछ बड़े स्ट्रोक और कुछ बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ उन्होंने अब तक बल्लेबाजी की है। नए ओवर की शुरुआत पहले गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक मिड ऑफ पे खिलाड़ी के पास, और वहां पर फिसले। मीर मुख्तार रन के लिए निकले जरूर थे लेकिन वापस सुरक्षित लौटे और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर अभी भी 51 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ये पारी का 5वां ओवर वर्तमान में, और इस बार फिर एक और अच्छी गेंद। यहाँ थोड़ी सी हड़बड़ाहट में है लेकिन एक अच्छी पारी की आवश्यकता, सहयोग दिया, समर्थन दिया है राम शर्मा को, और इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है क्योंकि सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, गेंदबाज पे दबाव बनाना होगा वहां पर मीर मुख्तार। अगली गेंद और इस बार ऑफ साइड में एक बेहतर स्ट्रोक, और यहाँ
गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर, पर पीछे फील्डर है, जब तक वे गेंद को रोकते पलटकर दूसरे रन के लिए 2 रन और खाते में, मीर मुख्तार के 2 रन और जहलम ब्लूज पाम्पोर के खाते में रन संख्या बढ़ती हुई 54 तक पहुंच चुकी है बगैर नुकसान के। सबसे महत्वपूर्ण बात 136 का लक्ष्य और अब तक विकेट नहीं खोया है। 50 से अधिकतम की यह साझेदारी पहले विकेट के लिए राम शर्मा और मीर मुख्तार ने निभाई है। एक और बेहतर स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, हालांकि स्थिति रन के लिए दौड़े जरूर थे पर वापस लौटे। हर किसी जल्दबाजी में नहीं है या मीर मुख्तार बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े संयम के साथ राम शर्मा को कहा कि भैया जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। और इस बार ऑन साइड में एक और बेहतर स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर खेला, पीछे खिलाड़ी पहुंचे और गेंद को फील्ड कर लिया, पर एक सिंगल जरूर मिलता हुआ यहाँ पर मीर मुख्तार और टीम जेहलम ब्लूज पाम्पोर की टीम को। Mir Mukhtar is eyeing big shot here. He is unable to connect. He wants to launch big, but bowler is doing well. He's taking pace off the ball. Even Ram checked his shot in the end. He's also loving pace. It's easy to take pace on, but when bowler tends to mix up a bit, it's getting a bit difficult to read him properly. And you can't use that sudden rush of blood style. You need to read the ball properly, get in possession, then to offer the shot. It means this wicket, there is even equal assistance for each and every bowler, but you need to hit the right lines and lengths. In every match, you need to make good use of your skill set that you possess. You need to bowl in the right areas, even on a belter of a track. If you bowl in the right areas, that's a nice take-out shot. That's 4. Oh, that's first boundary for Mir Mukhtar, and everyone is putting their hands together for Mir Mukhtar. Even Wadhwa brothers are watching him from Jalandhar right now. That's 4. Quality shot driven straight and beats the man at mid-off. Mir Mukhtar first boundary under his belt against his name. This time again hits hard but finds his fielder in place, not for runs. And Mir Mukhtar is betting on 10. He's on to 10 into the double figures. And his counterpart Ram Sharma, he's batted like a champion. He batted really well in match 1, match 2, and this is match number 3 for Ram Sharma. Inside the line this time, hit hard in the gap, down to the point boundary for 4. Just Bukhara 4 coming, and that was brought to you by Just Bukhara and powered by TCI Max Cement. So 2 boundaries for Mir Mukhtar here. One through mid-off, next one down to the point boundary. देखिए जलवा जरूर दिखाया है, हालांकि थोड़े शुरुआत में शांत जरूर रहे, लेकिन अब जाकर के हाथ खोलने प्रारंभ किया है मीर मुख्तार ने। 2 चौके लगाए हैं उन्होंने तजम्मुल के विरुद्ध, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के मध्यम गति के तेज गेंदबाज मीर तजम्मुल, सामने है मीर मुख्तार। मुख्तार के लिए गेंद, और इस बार फिर स्ट्रोक बढ़िया लॉन्ग ऑन किया, और ये तीसरा, लगातार 3 गेंदों से 3 चौके और स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत स्ट्रोक मीर मुख्तार के बल्ले से सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा चौका, 12 रन बटोर लिए 3 गेंदों से। हमने जिक्र किया था थोड़ा शुरुआत में शांत दिखे, लेकिन उसके बाद एक बार लय में आ गए, तो अब लगातार बेहतरीन और आकर्षक बल्लेबाजी मीर मुख्तार के बल्ले से। 3 boundaries for Mir Mukhtar here. Oh, next one, that's another quality shot, driven handsomely, full of one, nearly ox him. But Mir Mukhtar is looking in. He's looking in different touch today. He's looked good with bat. He's on to 18 or 15. It looks like that Mukhtar Mir is from other planet. He's in different mood today. He's batting really well. And as we watch Tajammul again, goes away from us, runs away from us. Mir Mukhtar on strike. That's another quality shot here from Mir Mukhtar. It's boundary number 4. That was brought to you by Just Bukhara and powered by TCI Max Cement. Mir Mukhtar, famously known as Bablu Bhaiya in Pampore, he's entertaining crowd here at the center. 4 boundaries in an over for Mir Mukhtar, and Tajammul and his experience is falling apart. And they're talking of Jehlum Blues. They're 70 after 6 overs. I think Jehlum Blues missed the trick. Mir Mukhtar should have been introduced in match 1.
He should have been introduced in match one. I think captain whenever- and the management missed the trick. He should have opened with Ram Sharma. अरे आज एंथम के बल्ले की चमक जरूर एंथम के कारीगर ने दिखाई जरूर है। अपने बल्ले से वो हथियार का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है आज उसकी एक झलक देखने को मिली है। जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर एंथम स्पोर्ट्स इंडिया की बात करें कश्मीर क्षेत्र के, मीर मुख्तार, उन्होंने अपने बल्ले की वो चमक जरूर दिखाई है इस मुकाबले में। भले ही अंतिम मुकाबले में उनका चयन हुआ, लेकिन शानदार और बेहतर प्रदर्शन अपने पहले ही मुकाबले में 22 पे नाबाद है। Oh, that's good sign from Mir Mukhtar. He's on his knees and he's sipping in at the moment. He's drinking water. Down on his knees. That's good from Mir Mukhtar. Now getting ready. Batted really well. It took some time. Now he's getting on, he's cashing on. Score is 70 for the loss of no wicket after 6 overs. Power play comes to an end. 70 on the board. That is enough. That is enough. 70 after 6 overs. Cricket expert Mansoor Khan is here. Cricket promoter Mr. Gulzar Ahmad is here. After 6 overs. It is 70 for the loss of no wicket. Mir Mukhtar batting on 22 of 16 and his partner is batting on 41 of 20 balls. This is good cricket from Mir Mukhtar and his partner. The two openers are dealing in boundaries at the moment. They are in a rush. 70 after 6, 12 overs remaining, and they are how many runs behind? They are 66, I think. They need 66 more runs to win this one. Fresh over is about to start. Mandatory power play comes to an end. After 6, 70 without loss. पावर प्ले समाप्त और पावर प्ले में 70 बनाए बगैर किसी विकेट के। क्या शानदार बल्लेबाजी। 41 राम शर्मा, 22 मीर मुख्तार। पारी का 7वां ओवर अब प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि 18 ओवर की ये पारी और 18 ओवर में 136 बनाने, 70 बना लिए हैं। 66 की आवश्यकता 12 ओवर में। यहां से जहलम ब्लूज पाम्पोर की टीम को रनचेजर्स पाम्पोर के विरुद्ध। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 7वां ओवर। राम शर्मा है सामने। अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो गई, छोर बदला गया है और ऐसे में नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। राम शर्मा 41 पे नाबाद, विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सटे हुए। ऐसे में पहली गेंद राम के लिए। राम ने खेला जरूर, हालांकि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को आकर के गेंद को फील्ड करना पड़ा, पर एक सिंगल जरूर मिला। 42 व्यक्तिगत रन संख्या राम शर्मा की 71, 6.1 के बाद मीर मुख्तार 22 पे सामने। जहलम ब्लूज पाम्पोर की यह प्रारंभिक जोड़ी बेहतरीन प्रदर्शन, और इस बार गेंद के आने का इंतजार किया बड़े आत्मविश्वास के साथ। अक्षता रूप से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया, ऑफ साइड में लुढ़की, खुद गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन की। अच्छी शुरुआत, बेहतर क्रिकेट, शानदार वातावरण, अच्छी खासी धूप खिली हुई। जहांगीर जोन्स को अलग पे खड़े हैं और उनके साथ दयाल सिंह जो दूसरे अंपायर हैं। एक और सम्मानजनक स्ट्रोक वापस बॉलर के दिशा में। 22 पे नाबाद है मीर मुख्तार और 42 पे राम शर्मा। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, प्रयास जरूर किया था, फाइन लेग की ओर गेंद चली गई। उस ओर फील्डर है नहीं, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी जब तक क्षेत्र रक्षण आकर के गेंद को फील्ड करते समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 72 पे और अब 64 की आवश्यकता। 7वें ओवर में राम शर्मा सामने 42 पे, 8 रन दूर अपने अर्धशतक से ये गेंद। और इस बार किनारा बाहरी पर पीछे खिलाड़ी तैनात हैं जब तक शॉर्ट थर्ड मैन से गेंद को फील्ड किया जाता। रन बनने की संभावना थी नहीं। 72 बगैर नुकसान के पहले विकेट की तलाश यहां रनचेजर्स की टीम को। इस बार फिर उसी क्षेत्र में, अरे एक बार फिर रन नहीं मिलेगा। 7वां ओवर, 72 रन, विकेट अभी तक मिला नहीं है। पहले विकेट के लिए जूझ रहे हैं यहाँ गेंदबाज रनचेजर्स के, लेकिन वो अभी विकेट मिला नहीं है, वो सफलता मिली नहीं है, उसमें सक्षम हुए नहीं है गेंदबाज। 4-5 गेंदबाजों का इस्तेमाल अभी तक किया गया है रनचेजर्स की ओर से, लेकिन किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली है। 7 पूरे 72, ये बढ़िया ओवर रहा, मात्र 2 रन आए। ओवर समाप्त, 7 के बाद 72 बगैर नुकसान के।
7 overs done. 72, just 2 of it. Good over this from Mir Hafiz. Bowled well. Kept things tight. Gone for 2. And Mir Mukhtar back on strike. That's a no ball. And it's going to be freed straight away. Should get the second one. Are they going to come back? Yes, it does. 2 more runs added. Overall, 3 runs added. No ball and a brace takes it to 75 now. They are now 61 behind. 61 more runs needed. Freed for Mir Mukhtar. Where is this one going? As Mir Mukhtar moves to 24. OS Musselman saying something. And Mir Mukhtar back away, find a scale leg on fence. Oh, there is a misfield. And Mir Mukhtar need to hurry. Good running between the wickets. 2 more runs added on. 2 रन और खाते में जोड़ लिया. फ्री हिट पे 2 रन आए, कोई बड़ा लाभ नहीं, लेकिन 2 रन जरूर मीर मुख्तार ने पूरे कर लिए. रन संख्या 77 तक पहुंच चुकी है 8वें ओवर में बगैर नुकसान के. 77 की ये नाबाद पहले विकेट की साझेदारी मीर मुख्तार और राम शर्मा ने निभाई है जेहलम ब्लूज पाम्पोर के लिए. इस बार फ्लाइट देने का प्रयास खेला जरूर. उस और खिलाड़ी तैनात है जब तक वे गेंद को फील्ड करते, लगभग लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से थोड़ा सा वाइडिश. और गेंद वहां पर मिसफील्ड होती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए. जस्ट बोकारा चौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता के साथ मीर मुख्तार का व्यक्तिगत योग 30 पे पहुंचा. 30 रनों की पारी, शानदार पारी. 81 रन संख्या बगैर नुकसान के पहले विकेट के लिए जोड़ा है. ये कुल रन संख्या इन 2 बल्लेबाजों ने 81 बगैर नुकसान के. 8वां ओवर. हाँ, इस बार खेला जरूर था, अंदरूनी भाग लगा, उसका लेग की ओर चली गई गेंद. 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 31 पे अब पहुंच गए मीर मुख्तार और कुल रन संख्या 82. 8वें ओवर में बगैर नुकसान के 136 बनाने हैं जीत के लिए. 8वां ओवर वर्तमान में 82 रन बना लिए हैं और इसके बाद एक और मुकाबला, वो आखिरी पूल मुकाबला होगा पूल ए का और कुल मिलाकर 6ठा मुकाबला होगा TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग का. सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला वर्सेस शम्स क्रिकेट क्लब अनंतनाग के बीच और उसका लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा. देखना और जुड़ना न भूलिएगा. और इस बार उठा करके लॉफ्टेड स्ट्रोक पर पीछे खिलाड़ी है और या दूसरे प्रयास में कैच को लपका जरूर और इस प्रकार से पहला विकेट 81 पे गंवाया राम शर्मा के रूप में जेहलम ब्लूज पाम्पोर की टीम ने. Struggling bowling unit, and that struggle comes to an end. First wicket is down here. Ram Sharma is on his way. He's caught it long off. Trapped, flighty trajectory, opted against Ram Sharma, and he decided to go after the ball and he's caught it long off. I think that flighty trajectory worked against, that ploy worked against Ram Sharma, and he's caught it long off. So he's on his way. After vital contribution, after healthy innings and knock, he's on his way. Mir Mukhtar is still there. He's standing firm. It is 82 for the loss of 1. Now they are 54 runs behind. Should be easy one for Jehlum Blues Pampore against Runchasers Pampore. Sajjad and Mir Mukhtar up against each other. Sajjad has hurt himself and is limping on the field. One can see that with naked eye. He's trying to walk. It's tough. It's difficult. But he's walking on the field. Onto the pad line he says, wait on, wait on. It's just like that in Kashmiri. Thawi, it's just like that. Stay there. 82 for 1. This over. We saw wicket coming of Ram Sharma. Umar, the man who provided that much needed wicket, flight, directs it down towards deep mid wicket. There is a man in the deepish area who does well to send in a return.
He wanted second, won't get the second one. 83 to end this successful over. 7 done. Oh, 8 done. It's 83 for the loss of 1. Yes, of course, and cricket expert Mansoor Khan throat out few words telling about that Mir Mukhtar should have been included in the squad. Well, management and Mir Farhan need to understand and re-strategize in the coming tournaments. Mir Mukhtar should open with Ram Sharma if they are to compete and win matches. And interesting thing about Mir Mukhtar is he need to close that unit there and just be part of the side every day, and that one driven straight. But he's batted really well. You got to admire the skills of Mir Mukhtar. And he's looking fit. That's good sign. These are the good signs for Mir Mukhtar. स्ट्रोक भी बड़े आत्मविश्वास के साथ खेले, ऐसा नहीं है कि कोई गलत स्ट्रोक खेले, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया, सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट किया। तो एक बेहतरीन एक मंजे हुए बल्लेबाज की तरह उन्होंने अब तक बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में। सामने है अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार ये गेंद, और एक बार फिर एक और बेहतर स्ट्रोक मीर मुख्तार के बल्ले से निकलता हुआ। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और एक की मांग, 1 रन और खाते में जुड़ा। ये 9वें ओवर की गेंदबाजी, 136 आपके सामने लक्ष्य है, और 81 रनों की वो नाबाद साझेदारी अंततः तोड़ी थी। राम शर्मा पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए थे। राम शर्मा और मीर मुख्तार ने आज पारी प्रारंभ की थी झेलम ब्लूज पांपोर के लिए। अगली गेंद, और एक बार फिर स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑन की, और काफ़ी लंबी दौड़ खिलाड़ी को लगानी पड़ी जब तक वे आकर के गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते गेंदबाज की ओर। एक और सिंगल मिलता था दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और 9वें ओवर की गेंदबाजी, 18 ओवर में 136 है ये जीत के लिए, और अब तक कुल रन संख्या 86। 1 विकेट के नुकसान पे राम शर्मा आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 9वें ओवर की गेंदबाजी, 86 1 विकेट पे, और ऐसे में ओवर भी समाप्त हुआ तो 9 पूरे 86 रन बना लिए हैं झेलम ब्लूज पाम्पोर ने रनचेजर्स पाम्पोर के विरुद्ध 136 के जवाब में। 9 ओवर का खेल आपके पास शेष है, 54 गेंदें यहां से, और अभी भी अगर बात करें तो 54 गेंदों से करीब 54 रन और बनाने हैं, अथवा 50 रन, ये देखना होगा। कुल मिलाकर रन संख्या 86 संभवतः, और अभी भी इस मैच को जीतेंगे 50 चाहिए 54 गेंदों से। 54 गेंदें, 50 रनों की आवश्यकता झेलम ब्लूज पांपोर की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। नए ओवर की शुरुआत सीधे बल्ले से वापस खेला, बॉलर की दिशा में फ्लाइट देने का प्रयास किया जरूर था, लेकिन रन बनने की संभावना थी नहीं। 14 नंबर की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज, 9.1 ओवर 53 गेंदों से 50 की आवश्यकता, लेकिन आपके पास विकेट सुरक्षित है। इस बार लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में। रन संख्या 86 से बढ़कर 87 हो चुकी है, और अब 49 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और इस बार स्ट्रोक बढ़िया, खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। 91 रन संख्या पहुंच चुकी है 10वें ओवर में झेलम ब्लूज पाम्पोर, और अब 45 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। Just 45 needed to win this one. Good shot, swept hard. Runs, 4 of them. It was on to the pad line. Easy pickings, easily done in the end. We have second match coming up. Sultanpur is taking on Shamas Cricket Club this afternoon. That's going to be the last game from Pool A or Group A. And by tomorrow, Group B games will commence. Over pitched. Mir Tajamal, does it carry? And benefit of doubt goes in favor of Mir Mukhtar, and is lucky to survive. And look at the smile, very smile from Awais Musselman and Sajjad Butt. And that one, Mir Mukhtar is backing away. Can't understand why he's making room. He's making room again and again. But that one, it's driven straight to long off, only a single. With that single, that marks the completion of over number 10. 10 done. It's 93 for the loss of 1. 8 overs remaining. 48 balls are going to come, and they are 43 runs behind. 43 needed of 48 balls. I think Ram Sharma, he thrown his wicket away. Talking of just Bukhara,
As far as address is concerned, opposite Indian Oil Petrol Pump, Agriclan, Magam. Whenever you are heading towards Gulmarg, it's on the left shoulder in Magam. When you are heading back home, it's on the right shoulder. And just Bukhara, Magam is a beautiful place. And talking about Janta Sports unit in this part of the world, I mean Jammu, Janta Sports doing wonders in a day and day out, sporting under 19 club, which means quite a lot. And you got to admire the skills of these people like Janta Sports, who are backing young lads, who are backing our next generation. And Janta Sports, credit goes to Janta Sports and its entire team and entire unit, as a team, as a unit, backing under 19 club, and hope they carry forward that mission. They keep pushing forward, as every day is a new day. We should work hard, and so is Janta Sports doing in this part of the world. Admiration from our side, recognition from our side, and we love to throw it out that they're doing wonders in this part of the world. And to me, incredible job done by Janta Sports. Backing under 19 club is never easy. It's a hard nut to crack. Coming back to the game, Mir Mukhtar back away punches this one. There is a field, there is production. Will just be one. Why is making room time and again? ये थोड़ा सा अलग प्रकार का उनका स्वभाव है खेलने का, और लगातार वो रूम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद स्ट्रोक लेने का प्रयास, लेकिन अभी तक उसमें सफलता भी मिली है। एक अच्छी बल्लेबाजी, एक बेहतरीन पारी अब तक उन्होंने खेली अपनी टीम के लिए। ये 10वां ओवर वर्तमान में, समझते 11वां ओवर, और ऐसे में एक और डॉट गेंद, ओवर समाप्त हुआ। यहाँ 11 पूरे, कुल रन संख्या जेहलम ब्लूज पापोर की 100 के आसपास पहुंच चुकी है, और यहाँ से मैच जीतने के लिए अभी भी थोड़ा सा समय और लगेगा जेहलम ब्लूज पाम्पोर को। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार की शुरुआत आज राम शर्मा और मीर मुख्तार ने दिलाई अपनी टीम जेहलम ब्लूज पाम्पोर को, वो प्रशंसक है, वो प्रशंसा के लायक है। बेहतरीन शुरुआत, अच्छी बल्लेबाजी, गैप में गेंद को निकाला, खराब गेंदों को सही तरीके से सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया, और सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट किया। नए ओवर की शुरुआत, मीर मुख्तार ने एक बार फिर गैप में गेंद को धकेला है, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। एक बार फिर मीर मुख्तार के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या 101, एक विकेट के नुकसान पर 35 चाहिए जीत के लिए। Well, it's 101. Sajjad is surprised. His friend is doing wonders with that, and he's cheering for Mir Mukhtar here, as Mir Mukhtar is batting on. He's on to 39, just 11 away from his 50 here. He took off helmet for a while because it's hot and humid at the moment here in this part of the world, here at Garota, Jammu. A beautiful place to be. Dispersed clouds away from the center. And Mir Mukhtar just 11 away from his individual half century. We have one centurion in the tournament, Shane Tangmag, Mr. Asim Bashir, who scored 102 the other day here. And it's debut game for Mir Mukhtar here. And he's on 39. Just 11 needed. Flight and offer. It was in the air for a while, but it goes wide up the field there, so no harm done. But talking of Janta Sports, Nazir, as the name goes on, Janta, it means community benefit is there. They're trying to serve the community. That's good. जनता स्पोर्ट्स ने सफलता के द्वार खोले हैं इस क्षेत्र में, और बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, जैसा कि आपने जिक्र ज़रूर किया, और निश्चित तौर पे खेल को बढ़ावा देने के लिए और इन खेलों को प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार का उनका एक उद्देश्य रहा है, जो उन्होंने कार्य किया है, वो सराहनीय है, वो प्रशंसक है, वो प्रशंसा के लायक है, और निश्चित तौर पर इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता भी रहती है, और उन्हें बखूबी इस क्षेत्र में उस कार्य को निभाया। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब उनका कार्य रहा है। फिलहाल 41 पर नाबाद है मीर मुख्तार, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार नए बल्लेबाज सामने हैं, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, और कुछ अजय बंदा से खेलने का प्रयास, गेंद का पीछा करना चाहते, वाइड का इशारा आया अंपायर, ध्यान
दयाल सिंह का 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या अब धीरे धीरे से बढ़ती हुई। और इस बार लगभग फुल टॉस लॉन्ग ऑफ पे खेला है पीछे खिलाड़ी, लेकिन गेंद को फील्ड कर लिया। एक सिंगल जरूर मिल जाएगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती। कुल रन संख्या अब जाकर के 104, 1 विकेट के नुकसान पे 11.4 के बाद अगली गेंद। और इस बार ऑन साइड में एक और बढ़िया स्टॉक मीर मुख्तार का, एक सिंगल जरूर मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ रन संख्या 105 पे 11.5 ओवर की गेंदबाजी। 31 चाहिए 37 गेंदों से। 31 needed. 30 needed of 36 balls. But what a start and what an innings. Well begin his half turn. Mir Mukhtar, it's party time in Pampore today if he gets to his 50. As Mir Mukhtar is batting on 42 now, just 8 away from his 50. And his teammates, they need to toil hard also because he needs drinks time and again. Once again, he want to sip in. So here comes the man with that water bottle. Short pause in the game. Mir Farhan is padded up next. Country Cricket Stadium, Garota, Jammu. This is TCI Max Kashmir Cricket League. Name itself is enough. From the serene valleys of Kashmir to the peaks and tablelands of Jammu, it's Kashmir Cricket League uniting us. Cricket itself is a great unifier. That unification, togetherness, and telling us that equality and equity is important at end of the day. So it is 107 for 1. 29 more runs needed to win this one. Of 36 balls, not 30, 29 needed. As Mir Mukhtar is just 8 away, he's nearing in on 50 here. And the other batter alongside Mir is Idris. Can they win this one? If they manage to win this one, they're gonna take 2 invaluable points and they're gonna end their losing streak today. Can they break free? Or they're gonna take away 2 important points? JK Sports Time in collaboration with Anthem Sports India Fashion Feast, Shining Star Pampore, MH Multi-Brand by Rafivani, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, H&D Complete Kids Wear near Nattipora, Srinagar, Delgate Sports Club, and another franchise-based league is coming up. Be ready. And talking of Janta Sports, community benefit is there. Oh, good shot, but straight to the bowler. Bowler does well to stop it using his boot to perfection. And TCI Max, it is someone special added to the fold. Straight to Tajamul again, no run again. 107 for the loss of 1. 8 away, Mir Mukhtar. That's little uppish, but away and wide from Tajamul. Moves to 43. 7 needed to get to his 50. And they need 28 overall. Little adjustment in the field. There is enough protection. Idris on strike. He is unable to break free. Another dot ball. Yasin operating with the ball. His first over, that was expensive, but this over is bowled really well. He's bowling in right areas. Goes deep in crease. The wicket keeper says, don't leak that single, but the 2 batters crossed over. Mir Mukhtar on strike again. Is he gonna go big? Is he gonna launch big? He goes big! Where is this one going? It is 6 of the batter
of Mir Mukhtar. And that six brought to you by Just Bukhara and powered by TCI Maximin. And Mir Mukhtar moves to 49. Mir Mukhtar on to 49. Unbelievable six. Even Gulzar Ahmad is surprised. He can't believe that six. But that is a biggie. He's on to 49. Who would have thought that Mir Mukhtar will lit up the Santa in this style, in this fashion. He's on to 49. He's on to 49. 115 for the loss of one. And Yasin is taken at long off right in front of our com box. It's 115 for the loss of two. Yasin, needless from Yasin, he thrown his wicket away. And it's 21 needed of 30 balls. 5 overs and they are 21 behind. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, हालांकि एक विकेट. And Kanaya Vadwan hits 50. Sponsored by Anthem. Young lad is delivering for JKCA. It's quite some achievement. Young lad. And we have promised the country that this lad is a future star in making. 188 पे 5 और कन्हैया वाधवान ने अर्धशतकीय पारी खेली है. नाबाद हैं इस समय 51 रन पे. शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा. जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, और नासिर लोन उनके साथ बने हुए हैं नाबाद जोड़ी, और आशा करेंगे कि एक बेहतर साझेदारी निभे. फिलहाल वर्तमान में अगर हम बात करें, मीर मुख्तार 49 पे समझते नाबाद है. I think good move giving Nasir Loan a chance. He's also wonderful talent, and he has worked under the mentorship of VVS Lakshman. Lakshman is a big name, and Nasir Loan has worked under the likes of VVS Lakshman recently in recent past, to be precise, in Bengaluru. And that was a special net session for all-rounders across the country, and Nasir Loan was part of that camp, which worked under the mentorship of VVS Lakshman. And you know that who was Lakshman? The wall itself, who was a champion. And India conquered Aussies when Lakshman was part of Indian side. The way he batted on Australian surface, on Australian shores, he was wonderful. निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया. नासिर लोन का टीम में चयन हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन उनका रहा है. लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, इस मुकाबले की बात करें, मीर मुख्तार जिनका कि आज पहला मुकाबला है कश्मीर क्रिकेट लीग, TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग में, और वो इस समय 49 पे नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, और ये पहला अर्धशतक पहले ही मुकाबले में, तो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप अपना पहला मुकाबला इस लीग में खेल रहे हैं और 49 पे नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे. अगली गेंद और बहरहाल के हाथों के साथ ऑफ साइड में खेला, 1 रन के लिए दौड़ पड़े और एक और सिंगल मिलता हुआ यहाँ, और अब जाकर के मीर मुख्तार रहेंगे सामने. 49 पे नाबाद है. क्या शानदार बेहतरीन पारी खेली है उन्होंने आज इस टूर्नामेंट में. TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग पूल ए का ये कुल मिलाकर 5वां मुकाबला, और ऐसे में मीर मुख्तार जो कि 49 पे नाबाद है. आज उनका चयन प्रारंभ में आए राम शर्मा के साथ 49 पे नाबाद, सामना करने के लिए तैयार, और ये पहले ही मुकाबले में उनका अर्धशतक हुआ, यदि वो पूरा कर लेते हैं. ये गेंद और बाहर पैड पे टकराई. हल्की सी अपील, जोरदार तरीके से अंपायर पर प्रभाव बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज द्वारा, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया. रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं. 49 पे नाबाद. अभी भी 136 चाहिए जीत के लिए जेहलम ब्लूज पाम्पोर की टीम को. ये गेंद फ्लाइट देने का प्रयास इस बार ऑफ साइड में खेला, और यहाँ पर लपक लिया गया. 49 रन पर यहाँ विकेट मिला, और इस प्रकार से अपने अर्धशतक से चौके जरूर, लेकिन एक बेहतरीन शानदार और यादगार पारी मीर मुख्तार की. And Mir Mukhtar departs on 49. Wonderful knock, and he's walking off. He's in a rush. As he's walking off the field, batted like a champion, scored 49 invaluable runs. Few boundaries, or plenty of boundaries to be precise, and just a 6. That was wonderful knock. That was top notch, hitting the purple patch in his first game, and it was a debut game for Mir Mukhtar. Made his debut against Runchasers Pampore, and they are still 20 runs behind with 26 balls remaining. Anything can happen. Bowling side need to bowl well, some tight overs to make it interesting one. Pampore Blues are still 20 behind, 26 balls remaining. They need to fight it out and sweat it out.
Second match of the day, it's going to be Shamas Cricket Club taking on Sultan Warriors and Asim Muzaffar. The young lad is going to be a player to watch out. Plays it straight down the ground. Two men converging. Long off gets to the ball. One more run added. 19 aided up 25 balls. 19 की आवश्यकता 25 गेंदों का आना बाकी। जेहलम ब्लूज पाम्पोर वर्सेस रनचेजर्स पाम्पोर के बीच ये पूल ए का 5वां मुकाबला TCI मैक्स कश्मीर क्रिकेट लीग जेके स्पोर्ट्स टाइम के YouTube चैनल के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है और ऐसे में 19 की आवश्यकता। मीर मुख्तार की 49 रनों की पारी हुई समाप्त, एक बेहतरीन पारी और ऐसे में देखना होगा यहां से कितना जल्दी इस मुकाबले को समाप्त किया जाएगा जेहलम ब्लूज पाम्पोर द्वारा या फिर कोई चमत्कार यहां से करके रनचेजर्स की टीम इस मुकाबले में जीत अर्जित करेगी। ये देखना होगा। एक बेहतर और शानदार मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार। 19 चाहिए 25 गेंदों से, एक गेंद फेंकी जा चुकी है इस ओवर की और कुल मिलाकर ये 15वां मुकाबला 15वां ओवर, क्षमा कीजिएगा 15वां ओवर और एक और सिंगल मिलता हुआ और अब 18 की आवश्यकता 24 गेंदों से। 118 रन बना लिए हैं और यहां से अब 18 रन चाहिए 4 ओवर से है 23 गेंदों से अभी भी 18 रनों की आवश्यकता। 118 ये कुल रन संख्या समय जेहलम ब्लूज पाम्पोर की। अगली गेंद और इस बार नीचे रहती हुई गेंद को खेला जरूर पर रन बनने की संभावना नहीं। यासीन गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी भी 22 गेंदों से 18 की आवश्यकता। Here is Yasin again to Farhan and in the air and Farhan is lucky to survive. Catch gone down for unwanted second and his partner isn't willing to cross over. So we'll have to contend with one. They are 17 behind. It's their game to lose. As we watch Yasin again, goes away from us. Right on top. Plays it to long on. Should get one. And look at running between the wickets. Walk away. One more run added. 16 more needed by Jehlum Blues Pampore. That's full of one. Little uppish shot of Sajjad, but one more run. Singles keep coming. One more run added. 15 more needed of 19 balls. 19 गेंदों से 15 रन चाहिए मैच जीतने के लिए जेहलम ब्लूज पाम्पोर की टीम को और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज। 15 की आवश्यकता। एक और बेहतर स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर। एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। एक रन से ही संतुष्ट और अब 14 की आवश्यकता मैच जीतने के लिए और एक रन से अब लक्ष्य के नजदीक पहुंच रही है जेहलम ब्लूज पाम्पोर की टीम रनचेजर्स के बाद। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला वर्सेस शम्स क्रिकेट क्लब अनंतनाग के बीच पूल का आखिरी लीग मुकाबला। इस मुकाबले की समाप्ति के साथ इस मुकाबले की समाप्ति के बाद खेला जाएगा और आप जुड़ सकते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ। वो लाइव प्रसारण तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल 14 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 14 needed in 18 balls. Short pause. Little discussion or pep talk is going on. Conversation is going on. It looks like Sajjad is holding the ball. He's gonna bowl here. Sajjad Pollard to bowl. Sajjad will bowl. They need 14 more runs to win this one to end their losing streak. They lost 2 games on the trot in the tournament. At least a win will definitely boost their confidence. They have other assignments coming up in next few days and this is going to boost their confidence. That's a good shot, straight, hit hard, but long off is in place. Only a single. Down to 13 of 17. 17 से 13 चाहिए मैच जीतने के लिए यहाँ जेहलम ब्लूज पाम्पोर की टीम को। 13 की आवश्यकता। 123 रन बना लिए, 136 बनाने हैं, 123 रन अब तक बन चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ पारी खेली आज मीर मुख्तार ने 49 की, राम शर्मा ने भी 42 की पारी खेली और वो बेहतरीन पारी थी। इस बार फरहान के बल्ले से एक और बढ़िया स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। 123 से बढ़कर 127 और अब 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए जेहलम ब्लूज पाम्पोर को। ये पहली जीत हो गई उनकी इस टूर्नामेंट में अब तक के लीग मुकाबलों में।
Just 9 needed. It's down to single digit mark now. 9 away. Healthy boundary of the batter Mir Farhan. Sajjad goes away from us. Flight and offer goes again. Two men converging. On the bounce to Skellig. One more run added. 8 की आवश्यकता मैच जीतने के लिए 128 136 बनाने 135 बनाए थे रन चेजर्स की टीम ने 18 ओवर में और अब तक 128 रन बना लिए हैं 8 की आवश्यकता यहाँ झेलम ब्लूज पांपोर को अगले गेंद लेकर के एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर 2 खिलाड़ी उस ओर और जब तक गेंद को रोका जाता दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 2 रनों के साथ 130 और अब 6 की आवश्यकता मैच जीतने के लिए One big shot should seal the deal. Here is Sajjad. This time he goes deep in crease and works it away. And action moves to next over. Yeah, action moves to next over. I think one ball is remaining. Is it? 131. Just 5 more runs needed. No, it's last ball coming up. Farhan comes down the track. Doesn't middle. Over comes to an end. Action moves to next over now. The second last over of inning number 2. Shamas Cricket Club will face Sultan Warriors in match number 2 of the day. And that's going to be the last game of Pool A, Group A. And that's going to be the last league round robin game coming your way this afternoon. Sultan is winning their 2 matches on the trot. They have 4 points under their belt. Likewise, Shamas Cricket Club, they have their tail is up literally after winning 2 out of 2. The 2 teams in the middle, Runchasers and Jehlum Blues, both are winless. And up goes the finger. He's given out. Mir Farhan is run out here. So Farhan got to go. Wicket number 6 down. Farhan is on his way back to pavilion. Just 4 needed of 11 balls, is it? Well, scorer need to edit it. Mir Farhan is on his way, and that brings Gajubana in at number 6. 5 विकेट अब तक मिल चुका है रनचेजर्स की टीम को 4 रनों की आवश्यकता यहां से मैच जीतने के लिए 132 5 विकेट गजुबाना नए बल्लेबाज मीर फरहान आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज थे रनआउट के रूप में वो मैदान से बाहर चले गए और अब गजुबाना होंगे नए बल्लेबाज यहां से 4 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए और अब काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है झेलम ब्लूज पामपोर की टीम इस पहली जीत को सुनिश्चित करने के लिए इस पहली जीत को हासिल करने के लिए इस टूर्नामेंट में यहाँ एक सिंगल मिल जाएगा और अब 3 चाहिए गजुबाना होंगे स्ट्राइक पे Gajubana to take strike. Just 3 runs away. 1-4 should seal it for Jehlum Blues against Runchasers Pampore. Teams are in the house. Both teams arrive at Sultan Warriors and Shamas Cricket Club. Yasin again goes and bows. Gaju comes forward. With a straight bat, he's off the mark. And with that single, they are just 2 runs behind. 8 balls remaining. Yasin continues to bowl. 2 runs needed by Jehlum Blues to win this one. This time goes across the line. This fielder will just be 1. Scores a level. Jehlum Blues won't lose this from here on as scores a level. 7 balls remaining. 1 needed. But Jehlum Blues to win this one. Oh, that's a quality. Shot driven straight. And misfield in the end. That allowed Gajubana and his partner to cross over. And it's Jehlum Blues Pampore prevail in the end by 6 wickets. Nice little maneuver.
alongside Sheikh Nazir. We'll take you back with this message. We'll be back after half an hour with match number 2 of the day. It's going to be Shamas Cricket Club taking on Sultan. Will you join us for that dead rubber this afternoon? Take care of yours. Assalamu alaikum fi amanillah.